अनफोर्स्ड एरर त्रिसा जॉली की, जिस वजह से नेट पर लगी शटल। एक पॉइंट फिर से श्रीलंका को मिला है और डायस और हिंडेवे की जोड़ी अब 8-5 से आगे, लेकिन यहाँ पर सर्विस फॉल्ट, अंक भारत को मिलता हुआ। और बढ़िया जजमेंट वहां पर सचिन डायस के द्वारा, बिल्कुल अंतिम समय तक अपने नजरें बनाए रखे और फिर शटल को जाने दिया कोर्ट के बाहर। सूझबूझ भरी ये तालमेल दोनों खिलाड़ियों के बीच, और क्या शानदार प्लेसमेंट, बेहतरीन अंतिम समय पर अपने कलाइयों को मोड़ा वहां पर सचिन ने। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बिल्कुल रॉन्ग फुटेड कर दिया वहां पर त्रिसा जॉली को, और 10वां पॉइंट श्रीलंकाई जोड़ी के नाम। Service over. 7-10. The Sri Lankans have done a fabulous job so far, 10-7. Looking at their footwork, they're quite measured. They know what to do. They've done their homework. Just feel they have the upper hand at this point in time. And as we speak, the Indians fight back. Good play there from Arjun. It's all about staying in the hunt. Give yourself a chance. Well, he missed out there. Genuine opportunity to fetch a point, but he has missed out. Arjun should be disappointed with that. Look, there's a lot of room to play with, but then he manages to hit the tram lines. Those are active, while the doubles play, not in the singles. 11-8, the Sri Lankans leading. भारतीय प्रशिक्षक दोनों खिलाड़ियों को समझाते हुए, उन्हें भी पता है कि मिड गेम ब्रेक में जब आप पिछड़ रहे हो तो मानसिक तौर पर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दबाव आ जाता है खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन आप अगर बड़े स्टेज में, इस बड़े मंच पे खेल रहे हैं, आपको पता है कि ये फाइनल मुकाबला है, ये अंतिम पड़ाव है इस प्रतियोगिता का, तो आप भी अपने अंदर सारी ऊर्जा समेटे हुए प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो रहे होंगे। तो अब मिड गेम ब्रेक के बाद ये मुकाबला फिर से शुरू होता हुआ 11-8 से श्रीलंकाई जोड़ी आगे चल रही है। और बेहतरीन तरीके से मिड गेम ब्रेक के बाद पहला अंक भारतीय जोड़ी के नाम। यहां पर अर्जुन और जॉली 9 पर पहुंचे हैं। और इस बार बेहतरीन फिनिश, जिस वजह से लिफ्ट करने में सफल नहीं हो पाए सचिन डायस, उनका रिटर्न कोर्ट से बाहर जाता हुआ और अंक एक बार फिर से भारतीय जोड़ी के नाम। ये बेहतरीन कमबैक कहा जा सकता है, क्योंकि पिछड़ रहे थे पहले गेम में मिड गेम ब्रेक तक, लेकिन मिड गेम ब्रेक के बाद लगातार 2 अंक, लेकिन यहाँ पर शायद बाहर चली गई शटल, जिस वजह से पॉइंट श्रीलंका के नाम। देख सकते हैं आप एक मरतबा फिर से, जहाँ रिटर्न करना चाहती थी जॉली, लेकिन शटल को अपने नियंत्रण में नहीं रख पाई। Over. Just get a feeling that Sachin Dias is the key here. Such long levers, and he's quite agile as well. For a tall man to move in that way is quite special.
होगा, लेकिन कोशिश कर रहे हैं और ये उनको दूसरे गेम के लिए बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास देगा। जी हाँ, यहाँ पर पहला गेम श्रीलंका के नाम 21-16 से श्रीलंकाई जोड़ी डायस और हेंडावा ये पहला गेम अपने नाम करते हुए भारतीय खिलाड़ी अर्जुन और त्रिसा जॉली के खिलाफ ये पहला गेम जो आज के दिन का पहला फाइनल मुकाबला है मिश्रित युगल वर्ग में। वहाँ सचिन डायस और थिलिना हेंडावा ये दोनों खिलाड़ी जो आपके स्क्रीन के सामने हैं, क्या बेहतरीन प्रदर्शन करके ये पहला गेम अपने नाम करने में सफल हुए हैं। 21-16 से पहले गेम में श्रीलंकाई जोड़ी आगे। चलची बढ़िया इंडिया वाला कथा 20 seconds. 20 seconds. वापस आते हुए कोर्ट पर ये पहला फाइनल मुकाबला है आज के दिन का। आज सारे फाइनल मुकाबले खेले जाने वाले हैं। हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर मिक्स डबल्स फाइनल के साथ, जहाँ पर भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और त्रिसा जॉली की वो सामना कर रहे हैं। सचिन डायस और थिलिना हेंडावा श्रीलंका से पहले गेम में हार चुके हैं, अब दूसरे गेम शुरू होता हुआ चाहेंगे डिसाइडर तक धकेलने के लिए। सर्विस श्रीलंका के पक्ष में और सर्विस सही। जी हाँ, ये बेहतरीन प्लेसमेंट वहाँ पर शटल की, जिस तरह से जिस अंदाज से थिलिना ने ये दूसरा गेम शुरू किया है। यहाँ पर एक छोटी सी गलती जिस वजह से, जी हाँ, सर्विस भी गंवाया, पॉइंट भी गंवाए और 1-1 की बराबरी पर यह दूसरा गेम। पहला गेम 21-16 से श्रीलंका के नाम रह चुका है। यहाँ पर सर्विस का मौका ज़रूर मिला था, लेकिन यहाँ पर भारतीय जोड़ी सर्विस गंवाती हुई ये श्रीलंका को एक और अंक 2-1 से आगे इस समय डायस और हेंडावा की जोड़ी। सर्विस सचिन डायस की, यहाँ पर नेट पर थोड़ा चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेट पर मार बैठे, जिस वजह से अंक भारत को मिला है। यहाँ पर जरूर चाहेंगे कि निर्णायक गेम तक लेकर जाएं इस मुकाबले को। और बेहतरीन प्लेसमेंट, एक बार फिर से जानबूझकर अपने प्रतिद्वंदी के सर के ऊपर से शटल को निकाला और कोई मौका नहीं था वहां पर। They've been quite clinical, the Sri Lankans. Easy there. Good comeback from Arjun. Fantastic drop shot. And Heंडावा was caught off guard. And talking about the Sri Lankans' mindset, they always thrive on adversity. Whenever challenges possess in front of them, they've always come out trumps. Yes, there is a lack of resources, limited ability, but they have made the most of it. Playing here in Cuttack, Odisha, India is never easy, but they've been able to silence the crowd. Even though there is no crowd, but still. 4-3. Good thinking there from Jolly. Backhand serve going right. They lead 4-3. So
test of temperament for the Indians. Will they be able to come back? Well, they're coming back in fine fashion. 3. What a fight back from them. 5-3. For a moment, we are thinking that Sri Lankan will run with this game. But then the Indians, they have something to prove. Faster, okay? Had a word with the chair umpire, the Indians. Oh, that was quite fast. Not at all easy for Jolly. 4, 5. When a sutler like Sachin Das goes for that smash right onto that body, drive into the body, and then had no clue whatsoever. It was just too quick for her to react. That was traveling rapid. 5-4. Keep an eye on Sachin Das. He is the X factor. You need to keep him quiet. You need to keep him out of the action. Service over. 6, 4. A slim lead for the Indians, 6-4. बढ़िया जजमेंट फिर से। Service over. 5, ये बहुत 6. महत्वपूर्ण होता है बैडमिंटन में। जब आप डबल्स मुकाबले खेलते हैं तो अपने साथी के साथ तालमेल बिठाना, फिर दोनों मिलकर जजमेंट करना, शटल कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। भारत आगे चल रहा है ज़रूर, लेकिन अंक श्रीलंका को मिला है। ये दूसरा गेम काफ़ी रोमांचक होने वाला है। पहला गेम हालांकि एक तरफा रहा कहीं ना कहीं, और यहाँ पर गलती फिर से नेट पर मार बैठे, और उसके साथ ही बराबरी का अंक श्रीलंका हासिल करती हुई 6-6 से बराबर ये मुकाबला इस समय। और शानदार बेमिसाल तरीके से अब एमआर अर्जुन पॉइंट लेते हुए भारत के लिए, जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन फिनिश। 7-6 से भारत आगे इस मुकाबले में। That's quite a bit of surprise. Indians leading 8-6. And I just get a feeling that Sri Lankans are giving Indians a chance by striking it quite wide. We all want an even contest. Service over. 7, 8-7. Creeping in. Sri Lankans have been able to pocket the first game. This is the second. Well, they're coming back. 8-8. Don't want to give a sniff to the Sri Lankans. They will pounce on it. Indians need to make sure that they take a healthy lead, or else it would be curtains for them. 9-8. Sri Lankans leading 9-8. You don't want to do that. We all know how fierce they are when they lead. They just run away with the contest. Well, solid strikes there. Service over. Pretty hard to defend. 9-0. Pretty hard to block for the Sri Lankans. Had no answer to that. Arjun is looking confident. Belief is such a word. It matters a lot in the finals. That one strike that brings you back into the game. Yes, that killer instinct is back in the Indian camp. They are quite vocal in the second half. Maybe because they know that this is do or die situation for them. Ah, brilliant. 11, 9, Indians interval. again
proving their worth. Smash down the line and too good for Hendava. Indians lead 11-9. Seconds. 20 seconds. Players back on court. 11-9 से भारतीय जोड़ी आगे चल रहे हैं इस समय और ये दूसरा गेम है। पहला गेम श्रीलंका के नाम रह चुका है, 11-9. तिलिना और सचिन डायस के नाम रह चुका है, लेकिन यहाँ पर अर्जुन और त्रिशा जॉली अभी तक आगे चल रहे हैं। इसको आगे चलाते रहना चाहिए और वही करते हुए यहाँ पर त्रिशा जॉली। बेहतरीन फिनिश त्रिशा का, देखने लायक, काबिले तारीफ। एक और अंक भारतीय जोड़ी के नाम। 12-9 से आगे इस समय। स्मैशेस के ऊपर स्मैशेस, बेहतरीन। एक बार फिर से अब ऐसा लग रहा है कि वो लय में आ चुकी है और यहाँ से ये जो वापसी की कोशिश है, जो दूसरा गेम जीतने की कोशिश है, वो काफ़ी बढ़िया। 13-9 से अब 4 अंकों की बढ़त इस समय भारत के पक्ष में। इस बार लेकिन रिटर्न करने में अर्जुन सफल नहीं हो पाए और तिलिना एक अंक हासिल करती हुई अपनी जोड़ी के लिए बेहतरीन तरीके से वहाँ पर अच्छा नेट प्ले, अच्छी चालाकी देखने को मिला और अंक बहुत समय बाद भारत गवाया है और सर्विस भी गवाया है। और यहाँ पर बाहर जाती हुई शटल, ज़्यादा ताकत झोंक दी थी लेकिन शटल डिप नहीं हुई, जिस वजह से वहाँ पर कोर्ट के बाहर गया। एक और पॉइंट, एक और अंक श्रीलंका के पक्ष में और अभी इसके साथ उस फासले को घटाते हुए अब सिर्फ 2 अंकों की बढ़त भारतीय जोड़ी के पास। इस बार नेट पर मार बैठे एमआर अर्जुन। इन गलतियों को सुधारने की जरूरत है। एक बार फिर से अनफोर्स्ड एरर। श्रीलंका की अच्छी वापसी अब दूसरी गेम में। पहला गेम काफी आसानी से श्रीलंकाई जोड़ी जीते थे, लेकिन अब वापसी करते हुए दूसरे गेम में बराबरी तक पहुंच गए हैं श्रीलंका के सचिन डायस और तिलिना हेंडेवा। 13-13 की बराबरी पर अब स्कोर लाइन, यहां से कुछ भी हो सकता है। और शानदार फिनिश यहाँ पर, अच्छा रिटर्न, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन त्रिशा जॉली के द्वारा। आप देख सकते हैं बैक हैंड, क्रॉस कोर्ट और कोई मौका नहीं था वहां पर। जी हाँ, अपने साथी खिलाड़ी को बताती हुई कि किस समय बाहर जा सकता है शटल, वही हुआ बिल्कुल। अब देखिए वहां पर तिलिना ने संकेत कर दिया था कि शटल बाहर जा रही थी और पॉइंट मिला है श्रीलंका को। दूसरा गेम काफी रोमांचक रहा है अभी तक, लेकिन भारतीय जोड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर आशा रखना है तो उन्हें ये गेम जीतना पड़ेगा। स्मैशेस के ऊपर स्मैशेस, बहुत ताकत झोंक दिए थे लेकिन आखिर में नेट पर मार बैठे, जिस वजह से अंक श्रीलंका को मिला है 15-14। अब बढ़त हासिल करती हुई श्रीलंकाई जोड़ी। सचिन, अर्जुन। Sri Lankans are leading 15-14. Pressure on the Indians. Service over. Good comeback there. 15 all.
dissecting that gap and hitting the central line. Coordination is very important. It's all about camaraderie. How well you know your partner. What chemistry do you have? Well, that was called out. Service over. I'm pretty surprised with that 16-15. decision. Coach. For a do not moment, I hug thought it before the was line in. does signal, okay? Oh, well, yes. Just by a whisker, it missed the baseline. Sri Lankans up and running again. Indians have to do a lot of leg work. Service over. 16 Lovely all. comeback there from Arjun. He knew there was no lot of gap between both the players. 16 all. This is an even contest now. You cannot rule out the Indians. Oh, yes. That's a killer blow. 17 Maneuvering the 16. gap and then hitting it right over the top. Quick. Brilliant finish as well. The snap of the wrist Thank you. and the follow through was quite excellent. They now need to close out this. 17-16. Just give it all. Don't give any opening to the Sri Lankans. And wide shot, ugly shot there from Sachin 18 Dias. 16. You never expect these type of shots from a top shuttler from Sri Lanka. Indians just 3 more away. Can they win this game? A lot of urgency from the Indians. They deserve a lot of applause there. 19 16. Fantastic movement and then the down the line smash. Play on. And Endeavour had no clue whatsoever. 19-16. अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस मुकाबले में। जिस अंदाज से भारतीय टीम इस दूसरे गेम में वापसी की है वो काबिल तारीफ। इस समय 3 अंकों की बढ़त उनके पक्ष में और ये बढ़िया रैली, लेकिन यहाँ पर फिनिश का मौका था। छलांग लगाते हुए रिटर्न सचिन डायस की। पूरी ताकत झोंकते हुए चारों खिलाड़ी इस बार, लेकिन कोर्ट से बाहर नियंत्रण में नहीं रख पाए। एमआर अर्जुन छलांग लगाकर स्मैश करने की कोशिश में 17-19. गलती कर बैठे और यहाँ पर सर्विस श्रीलंका के पक्ष में आता हुआ। क्या यहाँ से इस गेम को जीत सकती है श्रीलंकाई जोड़ी या फिर भारतीय जोड़ी इस गेम को जीतकर इस मुकाबले को फाइनल जो डिसाइडिंग गेम है वहाँ तक धकेल सकती है? ये देखने वाली बात है। 19-17 से इस समय भारत के एमआर अर्जुन और त्रिशा जॉली आगे चल रहे हैं इस दूसरे गेम में। यह है मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल मुकाबला। भारत के एमआर अर्जुन और त्रिशा जॉली सामना कर रहे हैं श्रीलंका से सचिन डायस और थिलिना हेंडेवा की। अब सर्विस के लिए तैयार होते हुए सचिन डायस। इस बार गलती। 18-19. अब ये फासला घटता हुआ, इस वजह से दबाव में इजाफा भारतीय जोड़ी के ऊपर। 19-18 हालांकि बढ़त भारत के पक्ष में ज़रूर है, लेकिन ये बढ़त सिर्फ 1 अंक का है। क्या शानदार फिनिश वहां पर थिलिना हेंडेवा की। 19 all. बिल्कुल बॉडी लाइन स्मैश और उसका कोई जवाब नहीं था। बहुत ही बेहतरीन फिनिश। 19-19 की बराबरी तक लेकर आ गई है श्रीलंकाई जोड़ी। ये मुकाबला, इस मुकाबले में खास तौर से ये जो दूसरा गेम है वहां पर रोमांच की कोई कमी नहीं है।
मोमेंटम मिल चुका है श्रीलंकाई जोड़ी को। वो चाहेंगे इस मुकाबले को यहीं पर समाप्त करने का। और यहाँ पर गलती रिटर्न करना चाहते थे सचिन डायस, उसमें सफल नहीं हो पाए। अंक मिला है भारत को और पहुंच गए हैं गेम पॉइंट पर। 1 गेम पॉइंट यहाँ पर क्या श्रीलंका बचा सकती है। 20-19 इस समय स्कोर लाइन। भारतीय जोड़ी चाहेंगी यहीं पर इस गेम को जीतकर इस मुकाबले को, ये फाइनल को आगे धकेले, अंतिम गेम तक धकेले। यहाँ पर गलती, लेकिन सर्विस में गलती। ये शायद फाइनल का दबाव है, सर्विस में गलती करते हुए, जिस वजह से 20-20 की बराबरी पर पहुंच गया है ये मुकाबला। शानदार शुरुआत कही जा सकती है आखिरी दिन की। ये पहला मुकाबला है और इस पहले मुकाबले में हम काफी संघर्ष देखने को मिल रहा है हमें। तिलिना की सर्विस और इस बार 21-20. मैच पॉइंट, चैंपियनशिप पॉइंट तक पहुंचे हैं श्रीलंकाई खिलाड़ी 21-20 से आगे। ये दूसरे गेम में, पहला गेम उनके नाम रह चुका है 21-16 से, दूसरे गेम में 21-20 से आगे चैंपियनशिप पॉइंट श्रीलंका के लिए। और इस बार बाहर गई शटल और इसके साथ ही ये मुकाबला जीतते हुए सचिन डायस और थिलिना हेंडेवा। क्या शानदार विजय यहाँ पर पहले ही मुकाबले में, इस प्रतियोगिता के पहले ही फाइनल में बेहतरीन तरीके से मेजबान जोड़ी भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और त्रिशा जॉली को हराते हुए यहाँ पर श्रीलंकाई जोड़ी सचिन डायस और थिलिना हेंडेवा। क्या बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला। पहले गेम को 21-16 से जीते, दूसरे गेम में बहुत ही बढ़िया संघर्ष देखने को मिला। एमआर अर्जुन और त्रिशा जॉली बहुत कोशिश करे, लेकिन अंत में ये श्रीलंकाई जोड़ी के नाम ये मुकाबला 21-16, 22-20 से इस मुकाबले को जीतते हुए सचिन डायस और थिलिना हेंडेवा। What a moment for the Sri Lankans. They have come to India and they have breached the fortress. Fantastic feeling when you are a foreigner winning the game in India. You win a lot of hearts and support as well. Quite emotional as well. Sachin Dias, yes, he's going through a lot of emotions. But never take credit away from Thilini Hendava. She has done her bit. She has helped Sachin Dias to win this, and it matters the most. And in the big finals, you need that. You need that killer instinct. You need that last bit. Congratulations and kudos to the Sri Lankans. They leave the big stage with a big smile. आने वाला मुकाबला है महिला सिंगल्स फाइनल, जहां पर 2 भारतीय खिलाड़ी आमने सामने होंगी, स्मित तोष्णीवाल और उन्नति हुड्डा। और वो मुकाबला भी एक रोमांचक होने वाला है। आशा करते हैं कि 2 भारतीय खिलाड़ियों के बीच एक शानदार मुकाबला अब से थोड़ी देर में। Odisha Open 2022 BWF2 Super Series 100. आप देख सकते हैं जो पहला फाइनल आज के दिन का था, जहां पर सचिन डायस और थिलिनी हेंडेवा ने जीत हासिल की, उसका मुख्यांश, उसका हाइलाइट्स आप अब देख सकते हैं। किस अंदाज में, किस तरह से पहला गेम को डोमिनेट किया और पहले गेम को बेहतरीन तरीके से जीते 21-16 से। उसके बाद दूसरे गेम में भारतीय जोड़ी
बेहतरीन वापसी करने की कोशिश कर रहे थे। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला एमआर अर्जुन और त्रिशा जॉली से। मिड गेम ब्रेक तक आगे चल रहे थे, लेकिन उसके बाद श्रीलंकाई जोड़ी दूसरे गेम को भी जीतते हुए, इस मुकाबले को जीतते हुए, फाइनल को जीतते हुए ओडिशा ओपन 2022 के मिश्रित युगल वर्ग में चैंपियन बने। सचिन डायस बहुत सारे इमोशंस, कल हार गए थे, आज जीत गए और अब से थोड़ी देर बाद उन्हें पुरस्कार, उन्हें सम्मान से नवाजा जाएगा। ओडिशा ओपन 2022 सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स पर, कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से। May I request the players to proceed towards podium. Silver medalist M.R. Arjun and Treza Zole, India. Gold medalist Sachin Dias and Helene Hindeva, Sri Lanka. On behalf of Mr. Bhavani Shankar, Shaini, Collector and DM Katak, Shri Rajendra Sharma, Observer, Badminton Association of India, Odisha Open 2022. May I request the silver medalist to claim the silver medal, stall, memento, and mock check. May I request the gold medalist to claim the gold medal, stall, memento, and mock checks. May I request all the dignitaries to join the winners for a group photograph. Yeah. They have to be satisfied with the silver Thank you, medals. sir. And Sachin Reyes and Tilina of Sri Lanka.
They are the champions. All are holding Thank the you, sir. memento presented by the Badminton Association of Odisha and Government of Odisha, and it symbolizes the message of peace, the Konark will, and the silver filigree of which it is made. And this is the close-up of the medal that is presented, the gold medal for the Sri Lankans. So this is a wonderful presentation ceremony, and the Indian players, they have to be satisfied with the silver medals. And following the COVID guidelines, the presentation ceremony has been completed, and the prize money for the champions of US dollars 5,295. And the district magistrate and collector lent his presence add to the honor of the presentation ceremony. And this was one of the most highlighted and important matches of the day. In fact, the first match of the day, that was the mixed doubles, that India was pitted against the Sri Lanka. Women's single final, Sumit Toshniwal, India. And we shall have versus the Unnati women's Hooda, singles match right now India. on the court number 1, or the only Umpire, court there, Salesh Smith Kulkarni, Tosniwal and Unnati India. Hooda. Service judge Smith Tosniwal of and India Madhavan, would be India. facing Unnati Hooda. That is there, the women's singles finals. Smith Tosniwal, quite experienced, very promising. At the same time, Unnati Hooda is nowhere behind. She is also very promising and full of energy and full of hopes. A lot of hopes are pinned onto their shoulders. Unnati Hooda is a girl from Rohtak. She had done wonders in under 15 earlier, in under 17 and under 19 also. And coming up to this level, that is Unnati Hooda had beaten Malvika Bansal. Malvika Bansal there. Smith Tosniwal on the left side, and on the right side, Unnati Hooda. They would be fighting for the title in the women's singles category. Smith Tosniwal had beaten Asmita Chaliha, who is basically from the Indian state of Assam. And it was a closely fought match that Smith Tosniwal had won, and Smith Tosniwal currently ranked at 265. And that is the way they have to face each other. And to conduct the match, the umpire is Sailesh Kulkarni from India, and also service judge and Madhavan, also from India. That is Sailesh Kulkarni from India. Practicing on the court, Unnati Hooda and Smith Tosniwal. Both are right-handed players, and a lot of actions are expected from them. Unnati Hooda, if she is that is service judge, and Madhavan, also from India. And if Unnati Hooda is able to take advantage of her height, then things would be very different. And Smith Tosniwal, even though she is quite agile and bold enough to move this way and that way on the court, she can give a tough fight. Smith Tosniwal, and I have been watching her games. She is a very, very cool player. Smith Tosniwal had beaten Asmita Chaliha in the earlier match, that was the semi-final number 1. Similarly, Unnati Hooda had beaten the Indian compatriot Malavika Bansal, who comes from the Indian state of Maharashtra, had beaten them.
So that is the way they are now pitted against each other in the showdown, final showdown for the medals. This is the gold medal match between the Smith Tosniwal and Unnati Huda. Ladies and gentlemen, on my right, Smita Toshniwal, India, and on my left, Unnati Huda, India. Smita Toshniwal to serve. Love all. Smith Tosniwal, Play. after winning the toss, has to serve Unnati Huda. Playing a short. 1 love. Opening the count, that is Smith Tosniwal in the first game. Away. So that is the way Smith Tosniwal has pocketed. Love. 2 points now. Staying quite poised and cool. That is what is most essential in a match. Was about to trip. There was some amount of 3 hurriedness love. there on the part of Unnati Huda. Footwork is very important. Once again, Unnati Huda to take on to Smith Tosniwal. 4 love. 4 consecutive points. This is definitely a good beginning on the part of Smith Tosniwal. Service over. 1-4. Service over. 5-1. If we look at the progress on the scoreboard, Smith Tosniwal is positioned in a comfortable way. 1 more point 6-1. to Tosniwal. Tosniwal is at best trying to make her opponent move quickly to the left side and right side by putting the shots in the different ways. Service over. It looked as if 2, Tosniwal was not 6. very keen to take on that particular shot. So she had to concede this point. Short serve. Just playing Travan there and 3, moving 6. slowly and steadily. As he was not able to put it in a backhand shot, that was Tosniwal. The footwork that we had is not here at the moment. Maybe he's the for the that ahead in the games. 4-6. Tosniwal was Service mostly over. banking on the 7-4. skills and tactics, was trying her best to move Unnati Huda to different positions in the court so that she would have a little bit of discomfort in returning.
And that plan definitely yielded there. 8-4. Oh, there was a 9 punching shot, but 4. this is the way it landed, way out of the lines. Comfortably placed now, Tosnewal. A Service little over. bit of 5-9. wrong calculation on the part of Smith Tosnewal. Both the players, they seem not to be in a hurry to gain points after the points. Just depending on different angle placings. That was out. 6-9. This is the way it happened in the slow motion. Play. Huda again to serve. Smith Tosnewal. Seven, 9. Give it, Shakil. That is Huda, the girl from Rohtak in the state of Haryana, the state that has produced the highest number of sports persons in the country in variety of sports. A short service. Oh, the reach was very short Service and over. she was not able to 10-7. make a proper return. This is the way that happened, and Tosnewal knew that that is the way the opponent would falter there and fell ultimately. There's the gold medal match that is going on in the final day of Odisha Open 22. Being played at 11-7. Jawaharlal Nehru Interval. Indoor Stadium at Cuttack in the state of Odisha. Tosnewal. Now, Tosnewal, if we look at the previous match that she played yesterday, she is not very, very calculative enough this time. And she plays it as if she has come for a practice match. That is the way the match temperament, the killing spirit. They're not there today. Maybe she is saving up all these things to come up with the final showdown 20 when they move up seconds. in the games at a later stage. 20 That is seconds. Tosnewal taking final tips, last moment tips from her coach. That was Huda. Quite a clinical display there in the first half of the game by Smith Tosnewal. As you mentioned, yes, she lacked a bit of clarity yesterday, but this time, 11, today, 7. she has been in the top draw. Play. A lot of work to do for the 14-year-old Unnati Huda. Won a Service gold over. medal in Khelo Haryana 8, under 18, 11. and she has a good connection with Bhubneshwar. She won the bronze medal in the mixed doubles in under 15 and 17 sub-junior nationals in 2019. So she knows how to win the big moments. Well, outside the baseline, it was lobbed Service up there, over. but good judgment 12-8. from Smith Tosnewal, who is leading 12-8.
Fantastic from Huda, just stamping her authority Service over. and dominance over Smith 9, Tosniwal. 12. Down the line smash. Just get a feeling that she believes in herself, even though she is 14-year-old. Smith is superior ranked, but then 418th ranked in the world for Huda. Far too Service away over. there. 13, Was there to be hit. 9. And just wanting to go over the top of the net. Instead, she smashes the shuttlecock into the net. 39. Well, missed out again. 14, Good 9. placement from Smith Tosniwal. He's playing with Unnati's footwork there. Going back, trying to use the depth of the court. Smith is looking in ominous form. The slice is pretty important. Good return. Fantastic from Unnati Service Huda. over. What a comeback. 10, She was down 14. with 2 points, but then again, that's the killer blow. Trailing by 4 points. The 14-year-old. She's got a wise head over her young shoulders. Back-to-back points. Some 11, confidence and relief for 14. Unnati Huda. A lot of area to cover for Smith. Caught her off guard and on the wrong foot. These long rallies are very important for Huda. Just to try buy some time. It was easy there. 12, Well, did it hit the 14. net? Cry of anguish there. Oh, may have hit the... Just before hit the shuttlecock. Another point for Unnati Huda, just 2 points away. Trying to be slightly cheeky there, Smith. Both the players dominating the rally. Long volleys. She has the last laugh. Service Lot over. of 15, time to 12. hit that shot. She was back and didn't recover at all. She had no extension of her arms. And Smith was able to muster another point. 15-12. Unnati on court. Immediately on court. That is Tosniwal's forte, making the opponent run to the different corners in the court. Play. And she plays a very easy game. That is the way we can see, mostly depending on the skills, while Huda is mostly dependent on her ability to reach for the shots. Fault. Oh, that was a wonderful placing. Service over. And Smith was 13, not able to pick it up, 15. even though she was within the reach she could have, but she was caught on the wrong foot. As footwork is very important, and the footwork has to be very calculated, because that adds to the finish of a shot. Good rally that was, and 14, 15. thus allowing the Play. opponent Huda to take on now. Huda to take on Tosniwal.
Service over 16 14. Smith Tosniwal, currently ranked 265. She has definitely some better judgments in the game. Staying poised there. Playing to the coolest nature, this position there. Oh, she tried to place Service it in that over way to put 15 a greater 16. amount of discomfort on Huda, but that didn't happen in that way. Play. It was not a proper finish that she had, for which it straight landed on the nets. The same thing she tried and the same action, and this Service time she was over successful in pocketing that point. 17 15. That was Smith Tosniwal. She has peculiar ways of putting the opponents into the discomfort and thereby eyeing on a point to be won. Away that was. Service over 16 17. Both the players, they don't seem to have that stinging attitude to the match. The score doesn't look very promising at the moment. 17 all. At 17 all, Huda is fitted against Tosniwal. Huda wins one more point this 18 time. 17. There was some amount of excitement and expectations about it was a wrong judgment, and Tosniwal thought that it would land way outside, but that didn't happen. At least in the gold medal match, there was some amount of excitement that there would be certain fireworks from Tosniwal, but Service nothing over as such had happened. 18 all. Both standing at equal footing, 18 all, Tosniwal to Huda. Service over 19 18. That is the way it happened in the slow motion. Play. Just 2 points away from the first game, that is Huda. No, that was not the way. 20. Things would have Game happened point that way. 18. If Tosniwal is not very careful this time, then the game would be Huda's. That's Huda playing with a greater amount of inspiration. Game. Oh, that is the First game won by Unnati Huda 21 18. that is the end of the first game, and Huda was able to prove her mettle. And Tosniwal's game strategy didn't pay her well this time. Of course, she can make a tremendous recovery in the second game because she is more experienced than Unnati Huda. That is Huda, and definitely her coach is a happy looking man now, obviously expecting a lot more things to happen
in the next game, and if that happens in that way, then the gold medal would be hers. And this is Tosniwal. So this is the match between Smith Tosniwal and Unnati Huda for the gold medal. And Unnati Huda, the girl from Rohtaki in Haryana, and this is Tosniwal. Both are experienced, and younger among them is Unnati Huda. Let's see what happens this time in the second game. If Tosniwal is not able enough, then she will have to concede the match. But Huda looks to be very promising. She has this stinging attack this time now. Looking poised and confident. 20 seconds. That is 20 Huda seconds. and Tosniwal for the second game of the gold medal match. On the final day of Odisha Open 2022 here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack in Odisha. Second game. Love all. Play. पहला गेम उन्नति हुड्डा के नाम रह चुका है और One, दूसरे गेम love. में भी ये अच्छी शुरुआत यहाँ पर उन्नति हुड्डा का। Fault. और इस बार स्मिथ तोष्नीवाल Service बहुत ही over. शानदार अंदाज में शटल को One प्लेस करती all. हुई वहां तक नहीं पहुंच पाई उन्नति हुड्डा, और वो भी अपना खाता खोलते हुए इस गेम में, ये दूसरा गेम है, पहला गेम 21-18 से उन्नति हुड्डा के नाम रह चुका है। महिला सिंगल्स का ये फाइनल मुकाबला ओडिशा ओपन 2022 में। ये अंदर, 2-1. इसके साथ ही ये पॉइंट स्मिथ तोष्नीवाल को। आप देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरीके से अंतिम समय पर शटल को प्लेस किया, और शायद जजमेंट में थोड़ी बहुत गलती उन्नति हुड्डा के द्वारा, जिस वजह से स्मिथ तोष्नीवाल को वो पॉइंट मिला और इस समय वो 2-1 से आगे चल रही हैं। इस बार रिटर्न में गलती, बैक हैंड रिटर्न नेट पर गई शटल और उन्नति हुड्डा को पॉइंट मिल गया है। पुरुष सिंगल्स इसके बाद उसका फाइनल मुकाबला खेला जाएगा, वो भी एक ऑल इंडियन बैटल रहेगा। इससे पहले हम मिश्रित युगल वर्ग का फाइनल देख चुके हैं जहां पर श्रीलंकाई जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को हराया था, लेकिन यहां पर महिला सिंगल्स के इस फाइनल मुकाबले में 2 भारतीय शटलर एक दूसरे के खिलाफ जद्दोजहद करती हुई। यहां पर तोष्नीवाल एक अंक गंवाया है, 3-2. पॉइंट मिल गया है उन्नति हुड्डा को, अब 3-2 से आगे इस मुकाबले में। ओडिशा ओपन 2022 में कल जो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे वहां स्मिथ तोष्नीवाल ने अश्मिता चालिहा को हराया था, वहीं उन्नति हुड्डा ने मालविका बंसोद को हराया था, और उन्नति हुड्डा उस मुकाबले को आसानी से 2 गेम में जीते थे। हालांकि दोनों गेम काफ़ी बराबरी का संघर्ष रहा, लेकिन तीसरे गेम तक धकेल नहीं पाए थे मालविका बंसोद। लेकिन यहाँ पर इस मुकाबले में पहला गेम को उन्नति हुड्डा ने जीत लिया था, दूसरे गेम में अब 2 अंकों से आगे चल रही हैं। The second game has added momentum to the excitement of people those who are watching there, and this is how it happened in the slow motion. Still, Huda is way ahead after pocketing the first game. Both the players, they're fast on their heels in the second game. 6-2. The progress that Huda is making, it could spell
Definitely some amount of worry on the part of Tosniwal. At 6-2, Huda to Tosniwal. Now the reach was 7, shorter, that is why 2. the shuttle was on the nets. The magic that we saw in the previous match of Smith Tosniwal when she was playing Asmita Chaliha. She was very, very agile and she was very fast on the heels. And that magic we don't find this morning when Smith Tosniwal is playing Unnati Huda. Play. Conceding one more point 2. to the pocket of Huda. Huda at 9, 8-2. Service over. 3, Let's see 8. with this service at 3-8 if Smith Tosniwal is able to make a recovery in this game. Otherwise, her attempts have gone futile and she has not been able to get as many points as she had been hoping. And it was a wonderful piece of action from Huda, and Service over. 9, Smith made 3. great many mistakes not to send it back to the court of Huda. Oh, the same thing. History repeats itself. 10, And knowing the big point of Tosniwal, that is the way Unnati Huda exploited. That is the same thing it happened. The stretch and the reach that we had been finding in Huda, that is not there in case of Tosniwal, at least on this morning. 11, 3. 11-3. Quite confidently, Huda is moving up, and coach for Tosniwal doesn't seem to be very much satisfied with the way she is performing on the court this time. And if she is calculated more of enough, then there could be a setback. However, Huda's coach is 20 definitely seconds. a happy man 20 on the court, seconds. and he has every reason to think that the gold medal would be in the pocket of Huda. At a very promising score of 11-3, that is 3. Huda to serve Tosniwal. Play. But the magic and the fireworks that we expected to unfold on the match today in this 12-3. women's singles finals, I'm sorry to say that is not there this morning. However, nothing can be predicted at the moment. Service over. 4, 12. Now at 4-12, Tosniwal is definitely has the disadvantage. Service over. 13, 4. And at 13-4, Huda has an advantage over Tosniwal. Mostly depending on the skills of placing to the corners. That is the way Tosniwal is playing. Now that was not the way. Some amount of fatigue 14-4. is definitely visible on Smith Tosniwal.
That is Huda, looking quite poised and confident. Oh, again a beautiful placing, and it bit Smith Tosnewall in such a way that 15-4. even though it was within her reach, she found it a little bit difficult to reach for this return. Maybe she had some discomfort this morning. That is why in lot many cases we find her just leaving out the shots, not attempting properly and not coming to with the proper finishing. 16-4. The same thing happened also this time at 16-4. It's a very formidable score, and Smith Tosnewall would find it very difficult to make a recovery. And it looks as if she is giving away the game and the match to Unnati Huda. Seventeen 4. 17-4, just 4 points away. And Tosnewall will have a very formidable time, a difficult time to come up to the label of Huda. 4 looks very, very meager in front of 17. Service over 5-17. Fatigue is definitely visible. At 5-17. 6-17. Indeed, it was a good rally. However, this time the luck was on the side of Tosnewall, just adding 1 more point. 7-17. 3 consecutive points that Tosnewall has picked up this time. We'll have to wait and watch if she is able to make a recovery. At 7-17, still a formidable score. Oh, the reach was not there on the part of Huda. 17. The 4th consecutive point Tosnewall has pocketed. 9-17. The 5th consecutive point, rising from 4 to 9. Judgment was proper, and 17. Tosnewall was able to pick up another point at 10-17. Still the gap looks formidable. Not Service looking very over. satisfied, 18. because the 10. way that she was expecting to move up and up, that was not there. And Huda staying poised and confident at 18, just 3 points away from the match. जी हाँ, कहीं ना कहीं एक अच्छी वापसी देखने को मिली तोशनीवाल से, लेकिन अभी भी वो काफ़ी दूर है। अभी भी 7 अंक पीछे इस दूसरे गेम में। उन्नति हुड्डा पहले गेम में अच्छा प्रदर्शन करती हुई जीती ज़रूर, और उसके बाद दूसरे गेम में अभी तक खासा एक तरफा रहा है ये मुकाबला। देखिए फिनिश, देखिए रॉन्ग फुटेड हो गई थी तोशनीवाल, और बेहतरीन तरीके से अपना 19वां अंक हासिल करती हुई यहाँ पर उन्नति हुड्डा छलांग लगाते हुए डाउन द लाइन स्मैश। शायद क्रॉस कोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे तोशनीवाल, इसलिए रॉन्ग फुटेड हो गए, लेकिन उनका पूर्वानुमान सही नहीं और अंक उन्नति हुड्डा के पक्ष में। अच्छी चालाकी दिखाती हुई, और इस बार अच्छी तरह से लिफ्ट किया वहां पर तोशनीवाल ने।
ये रैली लंबी चल रही थी, लेकिन एक अंक और इसके 20, साथ ही मैच पॉइंट और point, चैंपियनशिप पॉइंट पर 11. पहुंचे हैं उन्नति हुड्डा। पहला गेम 21-18 से जीत चुकी थी, अब दूसरे गेम में 20-11 से आगे चल रही हैं और यहाँ पर 9 मैच पॉइंट बचाने होंगे और यहाँ पर बाहर मार बैठी। इसके साथ ही उन्नति हुड्डा इस फाइनल को जीतते हुए, ये चैंपियनशिप को जीतते हुए उड़ीसा ओपन 2022 में महिलाओं के सिंगल्स won by मुकाबले में टाइटल को उन्नति जीतती हुड्डा। हुई उन्नति हुड्डा 21-18, रोहतक हरियाणा से शानदार प्रदर्शन। 21-11। पहले गेम को 21-18, दूसरे गेम को 21-11 से जीतती हुई स्मिथ तोष्णीवाल को हरा। जी हाँ सरोज जी, शानदार मुकाबला पहला वाला था वो भी, लेकिन We shall go for the highlights in this event of women's singles finals that was just ceremony completed. of women's That single was just completed between of Smith Odisha Tosniwal Open and Unnati 2022 Huda. BWF 2 Tosniwal, who Super had Series beaten 100. Asmita Chaliha in a wonderful match, was not able to repeat the feat. This is the way the match began. May I request the players to proceed to And definitely right from the beginning, Unnati Huda was able to exert some amount of pressure on Smith Tosniwal. silver medalist Sumit Toshniwal, India. This is how the points were Gold won medalist by both the players. Unnati Huda, India. On behalf of Shri Prateek Singh, IPS, Oh, DCP, this is the presentation Qatar, ceremony. Shri Huda Ajay Kumar staying poised at number 1 Singhania, position with the gold medal. Honorary General Secretary, Badminton Association of India, And that is Tosniwal, Odisha Open 2022. a little crestfallen May I request officials of the silver Badminton medalist Association of to claim Odisha the and silver also medal, Badminton Association of stall, India. memento, and mock check. And the presentation ceremony is very different May I from the request presentation ceremony that we The had gold been seeing medalist to earlier claim the gold in medal, the past. stall, Following all the COVID memento, protocol, and mock they have check. to learn themselves. They have to felicitate themselves. And a piece of stall that the players, they are covering on themselves. They are a highlighted textile from Odisha. This is the champion. This is the champion gold medalist Unnati Huda. May I request Just holding all the on the flag dignitaries of to Konark join the Wheel. winners for a group The photograph. symbol of progress, the symbol of peace. An incredible insignia from the temple at Konark. That is Tosniwal. So this is the end of the singles finals with the presentation ceremony. Tosniwal had to be satisfied with the silver medal, while the gold went to the bag of Unnati Huda.
May I request the winners for a group photograph? Winners. And this is going to be followed with one of the matches that will be full of fireworks as we expect. That will be the men's singles finals. Pocketing a prize money of 5,625 US dollars. That is Huda. That is Huda, and on to her right is Tosnewal. Of course, he holds better promises for the next time. That is Tosnewal, who had to be content with the silver medal. Thank you. So that was the run of women's singles finals. And now we'll have a new story. That is the men's singles finals. This is going to be played between Priyangshu Rajawat of India versus Kiran George, also of India. Priyangshu Rajawat, yesterday he had beaten Kaushal Dharamveer in straight 2 sets. So he's ready for the final showdown for the gold medal. And he would be playing Kiran George, and who had beaten the Anshal Yadav. Anshal Yadav, a very closely fought match that we saw. As Kiran George and Priyanshu Rajawat. And chair umpire is Emmanuel Kejebotsale of Botswana, and he will be aided by the service judge. एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि दो भारतीय शटलर यहां पर एक दूसरे के सामने, प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज। कल जो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे उसमें प्रियांशु राजावत ने कौशल धर्मवीर को हराया था, वहीं किरण जॉर्ज ने भारत के ही अंशल यादव को हराया था। और आज इस फाइनल मुकाबले के लिए दोनों तैयार हैं, दोनों प्रस्तुत हैं और ये कोशिश ज़रूर करेंगे कि आज ये फाइनल मुकाबला एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले, एक संघर्षपूर्ण मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि जो दो फाइनल्स अभी तक खेले गए हैं उसमें अभी आप देख सकते हैं ये है प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज
किस तरह से गए हैं। सेमीफाइनल के बारे में तो हम लोग ने जिक्र कर लिया, लेकिन उससे पहले जो क्वार्टर फाइनल मुकाबला था वहां पर प्रियांशु रजावत ने मिथुन मंजुनाथ को हराया था, वहीं किरण जॉर्ज ने शुभंकर दे को हराया था। तो आज क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, सेमीफाइनल जीतने के बाद फाइनल तक का सफर तय किए हैं और ये फाइनल मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। दोनों तैयार हैं और एक शानदार मुकाबला की उम्मीद ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि इसके बाद और दो फाइनल्स खेला जाने वाला है। एक है महिला डबल्स का, दूसरा है पुरुष डबल्स का। लेकिन अभी ये जो ऑल इंडियन फाइनल है पुरुष सिंगल्स का, ये देखने लायक होगा। तो सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है, दोनों खिलाड़ी कोर्ट पर मौजूद हैं, सर्विस जज और चेयर अंपायर भी तैयार हैं। अब मुकाबला शुरू होने के कगार पर। On my right, Kiran George, India. And on my left, Priyanshu Rajawat, India. Priyanshu Rajawat to serve. Level. Play. राजावत की सर्विस पहले और बेहतरीन फिनिश यहाँ पर छलांग लगाते हुए ये स्मैश, और किरण जॉर्ज को मिल गया है पॉइंट। शुरुआत अच्छी किरण जॉर्ज की, क्या इसी तरह से आगे बढ़ सकते हैं? अच्छी नेट प्ले दोनों के बाद, उसके बाद लंबी रैलीज, लेकिन यहाँ पर नहीं। एक समय ऐसा लगा कि राजावत उसे आसानी से रिटर्न कर लेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं टाइमिंग में थोड़ी गलती प्रियांशु की, जिस वजह से एक अंक गंवाया उन्होंने। एक बार फिर से 2-0 से इस समय किरण जॉर्ज आगे। और यहाँ पर गलती, किरण जॉर्ज की रिटर्न नहीं कर पाए। नेट पर मार बैठे और जिस वजह से पॉइंट एक बार फिर से किरण जॉर्ज को, और यहाँ पर प्रियांशु के लिए पहला पॉइंट। तीन एक से आगे इस समय किरण जॉर्ज। सर्विस प्रियांशु के पास। इस बार स्मैश बहुत बढ़िया प्रियांशु राजावत की, अपने लिए अपना दूसरा अंक हासिल करते हुए इस मुकाबले में। देखिए एक्शन रिप्ले में किस तरह से स्मैश किया और कोई मौका नहीं दिया। एक तगड़ा, एक ताकतवर स्मैश। इस बार लेकिन बाहर मार बैठे। क्रॉस कोर्ट लगाने की कोशिश में ज्यादा फ्लिक कर दिया कलायों को, जिस वजह से कोर्ट से बाहर गई और किरण जॉर्ज सर्विस जीतते हुए। बहुत ही बेहतरीन स्मैश यहाँ पर, लेकिन प्रियांशु की। ऐसा लग रहा है कि ये मुकाबला बहुत ही रोमांचक होने वाला है। प्रियांशु राजावत बेहतरीन तरीके से वहां पर अपने लिए एक और अंक बटोरा। ये है पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला ओडिशा ओपन 2022 में। मुकाबले खेले जा रहे हैं कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। ओडिशा जो धीरे धीरे भारत की खेलों के लिए राजधानी बन रही है, स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जा रहा है। हॉकी के मुकाबले यहाँ पर काफ़ी खेले जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और पॉइंट, जजमेंट में गलती, समय दिया, शायद देख रहे थे कि शटल कहाँ गिर रही है। आखिरी समय तक निगाहें ज़रूर रखे, लेकिन सही समय पर निर्णय नहीं कर पाए। जब तक वो निर्णय करते कि उन्हें रिटर्न करना है, तब तक शटल गिर चुका था। और ऐसे इस वजह से यहाँ पर चौथा पॉइंट प्रियांशु को मिलता हुआ। प्रियांशु बराबरी पर आकर पहुँच गए हैं इस पहले गेम में। 4-4 की बराबरी पर ये मुकाबला। इस बार लेकिन पिछली बार अच्छी रिटर्न थी, यहाँ पर डायरेक्टली सीधे नेट पर मार बैठे। बहुत समय बाद बराबरी तक पहुंचे जरूर थे, लेकिन यहाँ पर नेट पर मार बैठे, जिस वजह से अंक किरण जॉर्ज को मिला है।
अच्छी रैली यहाँ पर, 4 लेकिन गलती किरण जॉर्ज के द्वारा। service over फिनिश 5 काफी बढ़िया all. प्रियांशु की, एक बार फिर से हम देख सकते हैं वो डाउन द लाइन के लिए गए, दाहिने तरफ खेला किरण जॉर्ज से, हालांकि पहुंच गए थे शटल तक लेकिन रिटर्न करने में सफल नहीं, और ये एक मर्तबा फिर से बराबरी का अंक प्रियांशु राजावत के पक्ष में। 5-5 पर ये पहला गेम इस समय चलता हुआ। राजावत की सर्विस। The first game in the men's singles service category over 6 for the 5. point where they're poised at 5 all. Rajawat is Kiran George. A superb backhand return from George. 7 He's 5. in training in Prakash Padukone Badminton Institute. Basically, he's from Kochi. Kochi has also produced a great number of sports persons in a variety of sports. 8 5. And particularly the university there, it has been the cradle of Indian athletics and sports and games. The university there has produced the top-ranking sports persons in men and women in the country. 9 5. And for the moment, that is George, Kiran George. Just twisting the rib, and that was Rajawat failed to put it across. Service over 6 Rajawat 9. at 6-9. Serving at 6-9, that is Rajawat to Kiran George. Rajawat, the younger among the both, currently ranked 284. Start service. That was a great piece of 7, judgment on the part 9. of Rajawat. Rajawat, who created flutters last year when he was able to clinch the Ukraine international title, when it was not at all expected from the Indian player there. 8 Rajawat was able 9. to prove his mettle and was able to clinch it. And thereafter, he has been attracting the headlines all over. That is Rajawat. Rajawat had beaten Kaushal Dharambir in the semi-final. That was also a closely fought semi-final that we had been watching 9 yesterday. That is the way he is moving up. That is Rajawat. Coming up with a third service that allows them to fall back for the greater reach when the return comes from the opponent. Service over 10 9. Now making the mistake, he was not able to put it at the cross court that he wanted to happen. Judge at 10-9. Similarly, Kiran Judge is also well Service over experienced 10 all. and is being trained in the Prakash Padukone Institute of Academy of Badminton. He also has one international title in his pocket, that is Police International, currently ranked 287, with Rajawat at 284. So that proves the fact that Rajawat is in a better form this time. But let's see if he's able to convert it into his performance and clinch the medal thereby. 11-10 interval. Way outside. That's the coach of Rajawat. Just instilling important
Rajawat may come up with a greater amount of energy this time. That is Rajawat. 20 seconds. Rajawat is staying comfortable at 11 to 10. Rajawat to take on to George. Eleven ten. बहुत ही बढ़िया वापसी देखने को मिली प्रियांशु रजावत की, जिस वजह से अब मिड गेम ब्रेक में वो लीड करते हुए गए थे। यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया Service over. शानदार 11 तरीके से किरण all. जॉर्ज ने एक अंक हासिल किया अपने लिए। ये पहला गेम चल रहा है और काफी नेक टू नेक रहा है ये मुकाबला। 11-11 की बराबरी पर यहाँ पर गलती प्रियांशु की और लगातार मिड गेम ब्रेक के बाद 2 अंक हासिल करने में किरण जॉर्ज कामयाब रहे हैं। रिटर्न अच्छी नहीं हो पाई थी, नेट पर मार बैठे थे। कोर्ट कवरेज दोनों का बढ़िया रहा है। वो चुस्ती फुर्ती जिसकी आवश्यकता होती है वो देखने को मिला है इन दोनों खिलाड़ियों के द्वारा। यहाँ पर गलती किरण जॉर्ज के स्मैश को लिफ्ट करने में सफल नहीं हो पाए। बैक हैंड रिटर्न करना चाहते थे जरूर, लेकिन नेट पर मार बैठे और पॉइंट प्रियांशु रजावत को मिलता हुआ। दोनों काफ़ी पम्प्ड अप नज़र आ रहे हैं। दोनों में ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह से हम लोग पहले से ही ये बोलते आए हैं कि आशा की जा रही थी ये मुकाबला काफ़ी रोमांचक होने वाला है, और अब तक पहले गेम में वैसा ही कुछ देखने को मिला है। देखिए किस तरह से अपने विपक्षी को छकाने के लिए मजबूर कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्लिप कर गए प्रियांशु। Service over. थोड़े 13 नसीब ने उनका साथ नहीं दिया, जिस वजह से वो ठीक समय पर पहुंच नहीं पाए शटल तक, और एक अंक किरण जॉर्ज को मिलता हुआ। फुटिंग में गड़बड़ी, जिस वजह से वहाँ पर वॉलंटियर्स उनके सहायता करते हुए 13-12 से इस समय किरण जॉर्ज आगे। लेकिन याद रखिएगा मिड गेम ब्रेक तक कभी पीछे चल रहे प्रियांशु रजावत ने बेहतरीन वापसी की और 11-10 से मिड गेम ब्रेक एक लीड के साथ गए थे। वो एक मानसिक रूप में एक सकारात्मक संकेत जरूर रहता है खिलाड़ियों के लिए। इस बार शटल को आखिरी समय तक देखते रहे, लेकिन शटल डिप कर गई, जिस वजह से किरण जॉर्ज को अंक मिला। जजमेंट में गलती यहाँ पर प्रियांशु की। 14-12 से अब किरण जॉर्ज आगे चल रहे हैं, लेकिन कहा नहीं जा सकता ये मुकाबला कब करवट ले। यहाँ पर बाहर मार बैठे प्रियांशु। एक और अंक किरण जॉर्ज के पक्ष में। 12. ये ऑल इंडियन फाइनल, एक्साइटमेंट की कोई कमी नहीं, रोमांच की कोई कमी नहीं इस मुकाबले में। बढ़िया नेट प्ले, लेकिन इस बार प्रियांशु की रिटर्न अच्छी नहीं। नेट पर मार बैठे। लगातार अंक हासिल कर रहे हैं किरण जॉर्ज मिड गेम ब्रेक के बाद, जिस वजह से अब 4 अंकों से आगे चल रहे हैं केरला के किरण जॉर्ज। Kiran George 17. is now able to make his presence felt in the court there, not allowing Rajawat to come up beyond 12 points. Just playing different types of shots. That is the forte of George. Service over. 13 17. So break-up service. Rajawat this time. He is definitely working very hard on the court, and he has a wider movement on the court also, while George is mostly dependent on his tactics and strategy. Just playing different types of shots there. No, that didn't happen the way that Rajawat wanted to happen. 18 13. We can see it. Just look at the range of the shots that George is playing and forcing Rajawat to reach. And most of the 19, time, Rajawat 13. fails to reach and staying poised at 19 to 13.
Service over. 14-19. Rajawat, if he is not that careful, and this time he will not be able to upset the apple cart of Kiran George. 15-19. Rajawat is serving at 15-19. Oh, falling back had been tremendous Service over. on the part of Rajawat, but still 20, then, Game point. 15. it didn't deter him to clinch a point. And George is staying comfortable and confident at 20. Let's see if he's able to pocket the game. Game. Now the first game goes in First favor game won of by Kiran George. 21-15. So that is the way he thinks that the road to medal would be very comfortable and easy. So that was George clinching the first game against Rajawat. So he was able to halt Rajawat at only 15. Let's see if Rajawat is able to come for the better sting in the final showdown. That is Rajawat. And this is the final match in the men's singles category, the gold medal match between Priyanshu Rajawat, ranked 284, versus Kiran George. Both are from India, so it's all Indian finals. Men's singles finals. This being the men's singles finals, this is played the third match of the day on the ultimate day of Odisha Open 2022 here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack. Rajawat. 20 seconds. 20 seconds. Second game, love all, That is play. Kiran George with the first service in the second game. On the part of Rajawat, it was a miscalculation. Just aimless hitting, and he was caught on the wrong foot. 2, And that is Love. what Kiran George has been trying. Oh, it looks as if he is training at Prakash Podukone Academy of Badminton. It's showing the better result, and this time this is neck to neck, 3, nail to nail love. fight. A killer shot from Rajawat this time. Definitely satisfied with this shot and not looking complacent, but however, the point went in favor of George. A match well begun is match half won. So this is what we have been experiencing in this match between Rajawat and Kiran 1, George. 3. At 1-3, Rajawat to serve George.
Service over 4-1. पहले गेम को आसानी से जीतने के बाद दूसरे गेम में 4-1 से आगे चल रहे हैं। हालांकि मिड गेम ब्रेक तक मुकाबला अच्छा था, लेकिन उसके बाद किरण जॉर्ज ने शानदार अंदाज में कमबैक किया था। लेकिन यहाँ पर पॉइंट प्रियांशु राजावत को बेहतरीन तरीके से, देखिए प्लेसमेंट यहाँ पर प्रियांशु की, उनको मौका मिला, बैकहैंड रिटर्न हल्के हाथों से रिटर्न किया ठीक नेट के ऊपर से, और किरण जॉर्ज वहां तक नहीं पहुंच पाए। ये मुकाबला जीतना जरूरी है प्रियांशु राजावत के लिए, लेकिन किरण जॉर्ज की फिनिश देखिए, 5-2. उनको मौका मिलते ही वो स्मैश लगाते हैं, और स्मैशेस काफ़ी ताकतवर होते हैं उनके। अच्छी डिप वहाँ पर शटल की, जिस वजह से रिटर्न नहीं कर पाए प्रियांशु। 5-2 से आगे चल रहे हैं किरण जॉर्ज। ये गेम जीतना पड़ेगा अगर उम्मीदें बाकी रखनी है प्रियांशु के लिए। और यहाँ पर एक रेयर गलती किरण जॉर्ज के द्वारा, जिस वजह से शटल बाहर गई और अंक मिला है प्रियांशु को। यहाँ से वापसी करनी पड़ेगी, यहाँ से इस गेम को जीतना पड़ेगा। 5-3 से पीछे हैं, फ़र्क उतना ज़्यादा नहीं है, ख़ास तौर से जहाँ तक दूसरे गेम का सवाल है। पहला गेम पहले ही हार चुके हैं प्रियांशु राजावत, तो दूसरे गेम को जीत कर इस फाइनल मुकाबले को तीसरे और निर्णायक गेम तक धकेलने की कोशिश रहेगी उनकी। देखिए यहाँ पर बॉडी लाइन पर खेले, बेहतरीन तरीके से खेले, जिस वजह से एक अंक और मिला है प्रियांशु राजावत को। लगातार पॉइंट्स प्रियांशु के पक्ष में। इस बार रिटर्न का कोई मौका नहीं था, वहाँ से शटल आप लौटा नहीं सकते जिस तरीके से उन्होंने बॉडी लाइन पर टारगेट किया प्रियांशु ने। 5-4 से किरण जॉर्ज आगे चल तो रहे हैं, यहाँ पर नेट पर मार बैठे, स्मैश उनका गलत हो गया, जिस वजह से प्रियांशु को एक और पॉइंट, और ये बराबरी का अंक हासिल करते हुए प्रियांशु राजावत, दोनों भारतीय खिलाड़ी, और दोनों के बीच काफी बेहतरीन संघर्ष देखने को मिल रहा है इस समय। पहला गेम जीत चुके हैं किरण, दूसरे गेम में अभी तक आगे चल रहे थे, अब इस स्मैश के साथ वापस लीड में आते हुए 5-5 की बराबरी के बाद ये अंक किरण जॉर्ज के पक्ष में, जिस वजह से एक अंक से अब आगे। शानदार फिनिश थी वहां पर किरण जॉर्ज के द्वारा। 6-5 की बढ़त उनके पक्ष में है, लेकिन प्रियांशु की भी दाग देनी पड़ेगी, जिस तरह से प्रदर्शन किए हैं। यहाँ पर देखिए क्या शानदार तरीके से बैकहैंडर लगाया उन्होंने, कोई मौका नहीं दिया। उनके पास थी बैकहैंडर काफी सही, ठीक नेट पर, बेहतरीन नेट प्ले सरोज जी। 6-6 की बराबर। Sometimes the economy in movements doesn't pay off well on the court, and Kiran George did that mistake. Service over. He was saving up his 7, energy. He was not 6. moving very widely on the court. That is why he was clearly beaten in the last point. And Rajawat very agile and very fast on the heels. 8-6. And Rajawat will have to try very hard to put a checkmate on the movement of Kiran George, because he has already pocketed one game. Service over 7-8. Close on the heels, that is Rajawat at 7-8, serving George. This is the mistake Kiran George did, because Rajawat has the forte in his forehand, and he feels little discomfort when there is a return that has to be made from the backhand. And George made this mistake, putting the shuttle onto his forehand, and he made no mistake. Rajawat made no mistake to win this point. That is Rajawat. Oh, following. Rajawat has 8. been following the straight come and cross go. That is the way Rajawat had been following.
in making the returns. That is Rajabat at 8-all. At the moment in the second game of the final showdown between Rajabat and Judge. Both the Indians stand on the equal footing. Both of them, they have one international title to their credit. Judge had won the Police International, while Rajabat had won the Ukraine International last year only. One can watch Rajabat to understand that his forte is not backhand. His forte is definitely the forehand. 8. But however, the point goes in favor of Rajabat this time. It's definitely 11-8 the strong interval. point of Rajabat that he proved. Like he had been doing it time and again. Put it in his forehand, he will make no mistake. And put it in his backhand, he may falter. This is what George had been experimenting on Rajabat. So Rajabat and George. George has clearly an edge over Rajabat because George has pocketed the first game. And if Rajabat has to give a tough fight, then he has to pocket this game also, second game, so that they can move up to the deciding game, the third game in the match, in the final showdown in the men's singles category. Here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium on the final day of Odisha Open 2022. That is Kiran Jaz, the lad from Kochi in Kerala. Eleven 8. Play. Foul! 12-8. Rajabat seems to be a little confident, gaining from the mistake that George had this time. Thirteen 8. 13-8. Quite a formidable score in the second game. But George, being a matured player, more matured than Rajabat, nothing can be predicted at this time, who mostly depends on his skill and strategy. Lucky this 14, time, this is for 8. Rajabat. Fourteen to 8. Line just kill. Service over. 9-14. That is away. Service over. The point goes in 15, favor of Rajabat. 9. The fireworks that is expected from this match is not to be seen. Maybe for the reason that they both are playing to the empty stands. Had it been to the packed stands, they would
have played, then things would have been very different. Service over. Lot of 10, excitement would have 15. been in the air. However, coming back to the showdown that is going on in the Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack on the first edition 11, of Odisha Open 15. 2022. Judge Kiran Judge at 11 to 15. Twelve. 15. Rajavat making the mistake. He was not able to give a proper finishing to that shot. Service All over. from this mistake, 16-12. Rajavat has an opportunity. Of course, if we look at the body language, Rajavat is not so happy with the way he has been playing. Third service. Four. Oh, that is his fault. That is his forte, and this is the way. 17, He makes no 12. mistake when it comes to make a smashing shot, a killer shot on the forehand side. 17-12. Rajavat is looking quite confident. आत्मविश्वास से लवरेज 18, जैसे कि सरोज जी 12. बता रहे थे, क्योंकि पहला गेम हारने के बाद जिस तरीके से दूसरे गेम में वापसी की उन्होंने, और अब 6 अंकों की बढ़त उनके पक्ष में है। 18-12 से आगे चल रहे हैं प्रियांशु। काफी लंबी रैलीज देखने को मिले हैं इस मुकाबले में, लेकिन यहाँ पर एक गलती Service over. प्रियांशु राजावत की जिस वजह से 13, नेट पर मार बैठे 18. और अंक यहाँ पर किरण जॉर्ज को मिलता हुआ। पहले गेम को किरण जॉर्ज ने 21-15 से जीता था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रियांशु ने दूसरे गेम में खेला है, उससे पता चलता है कि क्यों हम इस मुकाबले को सबसे अहम मुकाबला मानते थे आज के दिन का। हमेशा पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला प्रतियोगिता में एक अव्वल दर्जे का मुकाबला माना जाता है, और यहाँ पर ओडिशा ओपन 2022 में जिस तरह से किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत ने अभी तक का प्रदर्शन किया है, उससे पता चलता है कि दोनों के पास काफ़ी अच्छा प्रदर्शन है। लेकिन यहाँ पर एक गलती प्रियांशु की, 14, लगातार 2 18. अंक हासिल करने में किरण सफल रहे हैं। इसी के बारे में हम लोग जिक्र कर रहे थे। यहाँ पर किसी को कम आंकना सही नहीं होगा। 18-14 की बढ़त। इस बार बॉडी लाइन स्मैश, क्या बेहतरीन स्मैश थी। और Service over. हालांकि यहाँ पर दर्शकों को 19, अनुमति नहीं मिली है, लेकिन 14. जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो ऑपरेशंस में काम करते हैं, जो राज्य सरकार या फिर बैडमिंटन एसोसिएशन से इधर आए हुए हैं, उन्होंने भी ताली बजाकर उसका सराहना किया। और अब सिर्फ 2 अंक दूर हैं इस मुकाबले को आखिरी और निर्णायक गेम तक धकेलने में। मानना पड़ेगा प्रियांशु राजावत, शानदार प्रदर्शन। क्या प्लेसमेंट, क्या बेहतरीन प्लेसमेंट। वहां पर बैक हैंड रिटर्न 20, सफल और गेम पॉइंट तक point, पहुंचे हैं 14. प्रियांशु राजावत। याद रखिएगा पहला गेम हार गए थे, लेकिन यहाँ पर 6 गेम पॉइंट्स हैं उनके पास। क्या किरण जॉर्ज बचा सकते हैं? क्या वो इस मुकाबले को यहीं पर समाप्त कर सकते हैं, या फिर ये आखिरी गेम तक धकेला जाएगा? अभी तक ऐसा लग रहा है प्रियांशु जैसे खेले हैं, ये शायद आखिरी गेम तक जाए। 20-14 से प्रियांशु आगे चल रहे हैं। यहाँ पर गलती, बाहर गई शटल, और इसके साथ ही दूसरे Second गेम game में won by प्रियांशु राजावत Priyanshu जीत हासिल Rajawat, करते हुए 21-14. इस फाइनल मुकाबले One game को all. तीसरे और निर्णायक गेम तक लेकर जाने में सफल हुए हैं। पहला गेम किरण जॉर्ज के नाम रहा 21-15, दूसरा गेम प्रियांशु राजावत के नाम रहा 21-14, और आशा की जा रही है कि जो निर्णायक गेम है इस फाइनल का, वो काफ़ी रोमांचक होने वाला है, काफ़ी संघर्षपूर्ण होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद वो शुरू होगा, और ये आखिरी गेम भारत के 2 खिलाड़ी, भारत के 2 उभरते हुए युवा सितारे, उनके बीच एक कड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा। ओडिशा ओपन 2022 में जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से हम लाइव हैं आपके लिए, और ये मुकाबले ओडिशा ओपन के 25 जनवरी से शुरू हुए थे। आज आखिरी दिन है इन मुकाबलों का,
और बाराबटी जो प्रसिद्ध बाराबटी किला है उसके ठीक अंदर ये इंडोर स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, काफ़ी बड़े मुकाबले यहाँ पर खेले जा चुके हैं। पहले हाल ही में 2-3 साल पहले यहाँ पर चैंपियंस कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेला गया था। उसके बाद इधर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बैडमिंटन और टेबल टेनिस मुकाबले खेले गए थे और अब जाकर ओडिशा ओपन का ये पहला संस्करण यहाँ पर खेला जा रहा है। और आप देख रहे हैं ओडिशा ओपन 2022 के पुरुष सिंगल्स का फाइनल मुकाबला, जहां पर भारत के 2 युवा सितारे किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत एक दूसरे के खिलाफ यहां पर एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। अपने प्रशिक्षकों के साथ सलाह मशवरा करते हुए दोनों खिलाड़ी, दोनों को पता है, उनके प्रशिक्षकों को पता है कि ये जो आखिरी और निर्णायक गेम है कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। नर्व्स ज़रूर रहेंगे, काफ़ी नर्वस रहेंगे दोनों, क्योंकि ये बड़ा मंच है, ये फाइनल मुकाबला है और इसके लिए सारी हिदायतें दी गई है उनके कोचेस के द्वारा। और अब दोनों प्रियांशु और किरण कोर्ट पर उपस्थित हैं। ये तीसरा और निर्णायक गेम अब शुरू होने के कगार पर। Final game. Love all. Play. The third and deciding game in the showdown between Rajavat and Kiran Judge. One. Love. Rajavat, with his first point, opened the account. Two. It Love. was Judge who was clearly beaten. Was not able to come up with a backhand return to Rajavat. One has to look at the placings that Rajavat makes there on the court. And Service. proper calculation in the nick of the time. So that is the way he was able to save 1 point. Done, Judge. There is an appeal, a misunderstanding about this. Three. Love. The match umpire from Botswana, Emmanuel, awards it in favor of Rajavat. Paul. Oh, he was clearly beaten. Rajavat Service was over. clearly beaten. He One. was not able to Three. lift the shuttle that was coming on his body. He looked definitely a little bit of adventurous, but that didn't happen in that way that he wanted it to happen. Oh, the game has picked up this time Three. with a lot of action and the fireworks that we've been seeing in the only 5 points that have been played so far. George looking lethal and aggressive this time, and Rajavat playing it very coolly. Service over. 4-2. That's 4-2 this time. Rajavat to serve George. Oh, that was a rally full of placings. And this time, 5, Rajavat 2. put it in such a way that was quite difficult on the part of George to pick it up.
Sometimes judge makes certain silly blunders, just allowing the opponent to come up with the points after the points. And Rajabhat all the time makes no mistakes in clinching points after the points. That is how Rajabhat stands at the moment, 5-2. 6-2. To 6-2, Rajabhat to serve. Both the players, the younger and the lot is Rajabhat, but still then, the carrier performance is almost same. They're very close to their hills on the rankings. Priyangshu is ranked at 284, while Service over. George is ranked at 287. Both of them, they have won international titles to their credits. Priyangshu with the Ukraine international, while George has the Polish international title. That was superb punching over. shot that came 7, from Rajabhat. 3. And Judge was not able to lift it up because he was little slower in reaching for the shuttle. The footwork is very important, rather. 7-3. This is the wrong Service part over. in 4. the play of 7. Rajabhat. In his backhand, he is little weaker. He's not able to bring that amount of accuracy that he is able to bring confidently on his forehand shots. 5-7. Judge 5 serving to Rajabhat at 7. Oh, great lift that was. Or dependent, mostly they are on the strategies. Oh, Service over. that was the mistake that 8, came from Judge. 5. And from the mistake of Judge, that was the Rajabhat coming out as the gainer. 8-5. That is the way Rajabhat is staying put to serve Judge. Not a very formidable score, not a very big gap, but still then Rajabhat is looking very confident. Domicile from Rajasthan, that is Rajabhat. The wonderful power punch that is. That is it, a wonderful placing there on the part of Rajabhat. 9. Perfect calculation. And that didn't go all wasted there. Rajabhat looks formidable at 9-5. Oh, great. Rajabhat made no 10, mistake in placing it to 5. the, even though it was on the, landed on the forehand side of George, but George couldn't understand. The tactical awareness, that is more important, and this is what failed Kiran Judge this time. One has to be tactfully very aware of the whole thing. Line judge. Service over. 6-10. With service over, it's Kiran Rajabhat at 8-10. Let's see if he's able to upturn the apple cart of Rajabhat. Rajabhat had been winning a number of consecutive points.
This is the deciding match for the gold medal in the men's singles category. Kiran Judge. That is way outside. 7. Just helping Judge to move 10. up to 7-10. Both are looking formidable, while the game has added momentum to it. No, that was not to be. The reach was too short 8. to lift 10. it and send it to the opponent's court. Play. Both of them, they are playing the same tactics. When it comes strict, they put it Fault. into the cross court. Service over. 11-8. Interval. And Rajawat Change ends. at 11-8 was able to clearly pit George for this point. इस मुकाबले की कहानी अभी तक ये रहा है कि प्रियांशु रजावत पहला गेम हारे ज़रूर थे, दूसरे गेम में बेहतरीन तरीके से वापसी किए, 21-14 से जीते और तीसरे और निर्णायक गेम में अभी 11-8 से आगे चल रहे हैं। तो एक अच्छी खासी 3 अंकों की बढ़त उनके पक्ष में है मिड गेम ब्रेक पर। मिड गेम ब्रेक के बाद दोनों खिलाड़ी अब कोर्ट पर आ गए हैं और ये मुकाबला जितना रोमांच से भरा हुआ है, ये शायद इस प्रतियोगिता का सबसे रोमांचक मुकाबला अगर आखिरी 2 दिन में हम देखें। कल जो पुरुष डबल्स का मुकाबला था, जहां श्रीलंकाई जोड़ी ने श्रीलंकाई जोड़ी और मलेशियाई जोड़ी एक साथ थे और मलेशियाई जोड़ी जीत गई थी, उसके अलावा अगर इस मुकाबले के ऊपर नज़र डालें तो ये काफ़ी रोमांचक रहा है। अभी तक 11-8 से प्रियांशु आगे। मिड गेम ब्रेक के बाद खेल शुरू हो चुका है। बहुत बढ़िया रैली, क्या बात है, क्या बात है। कमिटमेंट देखिए प्रियांशु की, छलांग लगाते हुए लिफ्ट करना चाहते थे, हालांकि शटल को अंदर नहीं रख पाए, नियंत्रण में नहीं थे, लेकिन फिर भी अपना 100% देते हुए इस मुकाबले में 11-9 से इस समय प्रियांशु राजावत आगे। लेकिन ये मुकाबला अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी भी 10 अंक प्रियांशु को हासिल करने हैं और किरण जॉर्ज जिस तरह से खेल रहे हैं उनके प्रदर्शन में भी इजाफा देखने को मिला है। और अगर हम बात करें, जैसे सरोज जी कुछ समय पहले बोल रहे थे, दोनों के बीच में अंतर बहुत कम है, ना केवल इस मुकाबले में बल्कि रैंकिंग्स में भी। 284 पर प्रियांशु राजावत, 287 पर किरण जॉर्ज, और रैंकिंग्स में ज़्यादा फासला नहीं है दोनों के बीच, और दोनों के खेल में भी ज़्यादा फासला नहीं है। लेकिन यहाँ पर गलती, किरण जॉर्ज को बहुत समय बाद सर्विस मिला था लेकिन गलती कर बैठे, सर्विस फॉल्ट, नेट पर गई शटल और एक अंक और प्रियांशु राजावत के पक्ष में। बहुत ही बढ़िया मुकाबला ये। जो भी घर में अपने ड्राइंग रूम में बैठकर आराम से ये मुकाबले का लुत्फ उठा रहे हैं, उनको भी पता चलेगा ये मुकाबला कितना अहम है। क्या रिटर्न देखिए वहाँ पर, ये एक बार फिर से देखेंगे हम एक्शन रिप्ले। बहुत ही शानदार तरीके से क्रॉस कोर्ट स्मैश लगाया किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत के पास उसका जवाब नहीं था।
12-10 की स्कोर लाइन, ये आखिरी गेम, ये डिसाइडर गेम दोनों के बीच, ये एक अच्छा संघर्ष देखने को मिला है, अच्छा जद्दोजहद देखने को मिला है। और दोनों के प्रशिक्षक जो इस समय कोर्ट के पास मौजूद हैं, उनको भी पता है कि इस मुकाबले का अहमियत कितना ज़्यादा है, खिलाड़ियों के ऊपर इसका कितना असर पड़ता है। यहाँ पर बाहर मार बैठे एक बार प्रियांशु राजावत फिर से, और फासले को घटाते हुए अब 1 अंक का फासला रह गया है। किरण जॉर्ज ने मिड गेम ब्रेक के बाद अच्छे पॉइंट्स हासिल किए हैं, जो उन्हें इस गेम में वापसी करने में मदद की है अभी तक। स्मैश का बढ़िया रिटर्न किया वहां पर जॉर्ज ने, और इस बार स्मैश गई नेट पर। किरण जॉर्ज को एक और पॉइंट, इसके साथ ही ये बराबरी का अंक हासिल करते हुए देखिए आप किस तरह से गलती कर बैठे वहां पर प्रियांशु राजावत, जिस वजह से नेट पर गई शटल। 12-12 पर बराबर स्कोर लाइन इस समय ये फाइनल मुकाबले में तीसरा गेम चल रहा है, निर्णायक गेम चल रहा है। और बेहतरीन किरण जॉर्ज के द्वारा इस बार बॉडी लाइन, और अब कुछ समय बाद जॉर्ज आ गए हैं बढ़त पर। यही है इस मुकाबले का रोमांच, कब आप जॉर्ज को देखते हैं आगे, कब प्रियांशु राजावत को। और कुछ समय तक प्रियांशु राजावत आगे चल रहे थे, लेकिन अब जॉर्ज को 1 अंक की बढ़त हासिल है। क्या यहाँ से वो और आगे बढ़ सकते हैं इस मुकाबले में? यहाँ पर बाहर मार बैठे प्रियांशु, एक और गलती, बार बार गलतियों को दोहरा रहे हैं, जिस वजह से जॉर्ज अब उनसे थोड़े आगे जा रहे हैं। लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते इस मुकाबले में, कब मुकाबला करवट ले ले, कब ये प्रियांशु के पक्ष फिर से चला जाए, ये आप बस देखकर ही पता चलेगा। लेकिन फिर से अनफोर्स्ड एरर एक बार फिर से प्रियांशु की। अब तीसरे गेम में 15-12 से आगे चल रहे हैं। George is looking poised and confident this time after that recovery. 16-12. George, from his looks and the body language, covering the wider distance there. 17-12. 17 this time to George. 17-12. Definitely all his tactics, they're yielding in adding points after the points to the credit of George. Rajawat seems to be losing a bit of tactical awareness. That's a chair umpire from Botswana, Emmanuel. Rajawat allowing George to move widely so that you'd not be able to stay focused. Service over. 13-17. 17. This time the tactics, the strategy of Rajawat showed the result. Thank you. Rajawat to serve George at 13-17. George just 4 points away from the match and title. Both the players covering wide distance. 14-17. Rajawat has one more opportunity to push its score at 14-17. Play. Play.
15, 17. Kiran Judge has to be very careful. From the mistake 16, of Judge, 17. there is one more point for Rajavat's booty. So neck-to-neck fight is going on. Service over. 18, 16. A great piece of action came from Rajavat, but that was not to be. Well tried, that was definitely. Judge at 18, just 3 points away from the match. George. You're on court. One of the highlighted events of the first edition of Odisha Open 2022, the men's singles. Fight for the gold is on. Oh, greater amount of fireworks that we have been watching. Service over. 17, 18. Rajavat closely following the heels of Judge, 17-18. Not looking very satisfied the way George put it. Sometimes the emotion is clearly visible in the body language of the players on the court. But while the matured players, the more matured players, they always stay put, whether they win a point or they lose a point. Like if I take a mention of Bjorn Borg in tennis, he was always cool, even at the losing or 18 even at the point all. of winning. Now that is why he is rated to be one of the best players that the world has ever produced. Both of them at 18 all. Oh, clearly beaten, that was Rajavat. Service over. 19, 18. Judge will have every reason to be more optimistic at the moment. At a score 19-18, not a very formidable score, but that is definitely making George feel comfortable at the moment. Comfort and confidence, these are the two things that he badly needs at the moment to clinch the medal. Now it was on the body and 20, Rajavat made the match mistake. point, 18. Is the game point and the match point. This is going to be for George in the final showdown in the category of men's singles. Game. Oh, that is the winner. The winner. Now we have the new champion in the men's singles, that is Kiran Judge. Kiran Judge. Kiran Judge has easily beaten Rajavat in 2-1 game Match score. won by Kiran George, 21-15. That is 14-21, Judge. 21-18. That is Judge, the new winner, the main singles champion, qualifying for the gold medal. So with the raised feet, he's showing that he fought it well and he found the result well and is satisfied with his performance. That is Kiran Judge, the lad from Kochi in Kerala, coached very effectively by Prakash Padukone, Academy of Badminton.
That is Kiran Judge. जी हाँ, क्या शानदार मुकाबला देखने को मिला इन दोनों खिलाड़ियों के बीच। आशा की जा रही थी कि एक तगड़ा मुकाबला देखने को मिले। पहला गेम किरण जॉर्ज ने जीता था 21-15 से, दूसरा गेम प्रियांशु राजावत ने जीता था 21-14 से, लेकिन आखिरी गेम, निर्णायक गेम, बिल्कुल ये कहा जाए तो ये डाउन द वायर गया ये मुकाबला और अंत में किरण जॉर्ज 21-18 से जीत हासिल करते हुए ओडिशा ओपन 2022 में पुरुष सिंगल्स वर्ग के चैंपियन बने। क्या शानदार मुकाबला देखने को मिला। जितना हम तारीफ करें इन दोनों खिलाड़ियों की उतनी कम है। ये सिर्फ किरण जॉर्ज की तारीफ नहीं है, तारीफ प्रियांशु राजावत के लिए भी है क्योंकि प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा। Ladies and gentlemen, we invite the dignitaries for prize presentation ceremony of men's singles of Odisha Open 2022 BWF Tour Super Series 100. प्रेजेंटेशन सेरेमनी होने वाला है यहाँ पर पुरुष सिंगल्स फाइनल का, जहाँ पर प्रियांशु राजावत और किरण जॉर्ज के बीच एक शानदार मुकाबला देखने को मिला और अंत में किरण जॉर्ज ने जीत May I हासिल request की। the players to proceed towards podium. तो जो ये मुकाबले हैं ओडिशा ओपन के, वो जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से आप सीधा प्रसारण देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स में। उसके अलावा इन मुकाबलों का आप सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल में भी आप देख सकते हैं। तो ये रोमांचक मुकाबला आज इस ओडिशा ओपन का Silver आखिरी दिन medalist है प्रियांशु और ये देखिए राजपूत, आप प्रेजेंटेशन India। सेरेमनी, प्रियांशु राजावत सिल्वर Gold मेडल medalist उनके किरण पाले में जॉर्ज, और किरण India। जॉर्ज को यहाँ पर चैंपियनशिप On behalf टाइटल of और Shri Bhavesh स्वर्ण पदक Bala, का मिलता हुआ क्या बेहतरीन Deputy प्रदर्शन आज देखने को Executive मिला किरण Director जॉर्ज को। and Finance Head, और उस तरह से यहाँ पर KCMW, कोविड-19 और Denmark, कोरोना वायरस भारत, के प्रोटोकॉल्स को मानते हुए and ये Shri प्रेजेंटेशन Rajendra सेरेमनी Sharma, डिग्निटरीज Observer Badminton Association ओडिशा of के India, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ Odisha इंडिया Open। के, तो यहाँ पर वो सिल्वर फिलिग्री जो कटक मशहूर है सिल्वर May फिलिग्री के request the लिए, silver medalist यूरोपीय to नगरी play से कहा जाता the है, और वो box सिल्वर check। फिलिग्री का कोणार्क चक्र जो ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर है उसका Gold चक्र medalist सिल्वर फिलिग्री में बना हुआ, claim दोनों the box check। को उसके साथ नवाजा गया, उसके साथ ही मेडल्स मिले और ये एक शानदार और जानदार मुकाबला ऐसे समाप्त हुआ। रनर अप आपके सामने प्रियांशु राजावत पुरुष सिंगल्स फाइनल में। बहुत बहुत अभिनंदन Thank you, दोनों sir। खिलाड़ियों को। किरण जॉर्ज अब आपके सामने ये हैं स्वर्ण पदक हासिल करते हुए केरला से आए किरण जॉर्ज, पुरुष सिंगल्स फाइनल के विजेता। दोनों का प्रदर्शन काबिल तारीफ, किरण जॉर्ज और प्रियांशु राजावत। इसके बाद और दो मुकाबले आज होने हैं। सीधा प्रसारण आप डीडी स्पोर्ट्स में देख रहे हैं, आप प्रसार भारती स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर ऑनलाइन भी देख सकते हैं और क्या शानदार मुकाबले रहे हैं। कल से हम जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक में मौजूद हैं और बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर, ना केवल भारत के शटलर्स से बल्कि श्रीलंका और मलेशियाई शटलर्स के भी मुकाबले हम आपके लिए लेकर आए हैं। जो आखिरी मुकाबला है आज के दिन का वो है मेंस डबल्स फाइनल, जहां पर मलेशियाई शटलर्स शिरकत करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले एक ऑल इंडियन फाइनल महिलाओं के डबल्स में देखने को मिलेगा, जहां पर पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद अपने साथी खिलाड़ी त्रिशा जॉली के साथ, और उनके सामने रहेंगे संयोगिता घोरपड़े और श्रुति मिश्र, दोनों चारों भारतीय और दो भारतीय जोड़ी के बीच ये मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ रहे हैं अंग्रेजी में शोभन गढ़नायक। शोभन, एक शानदार मुकाबला देखने को मिला, अब आप आ गए हैं कमेंट्री बॉक्स में महिलाओं का डबल्स मुकाबला। आशा की जा रही है कि ये महिलाओं का डबल्स भी एक शानदार मुकाबला होने वाला है। Thank you so much, Chiranjeev. Yes, absolutely. This is going to be another humdinger of a contest, women's doubles finals. Kurpare with Shruti Mishra will lock horns with Tressa Jolly and Gayatri Gopichand. It's gonna be another amazing contest. Gayatri Gopichand, the daughter of the legendary coach Pulele Gopichand, the man who revolutionized the Indian badminton.
it will be a battle of nerves and a battle of wits. The team at the end who holds the nerve will definitely end up on the podium. But what an amazing win that was from Kiran George, defeating Priyanshu Rajawat, even though I thought Priyanshu was the favourites coming into this tournament. But then, Black, what a correct. twist of fate for Kiran George. Black. So red is yours. Black, you won. For this match, chair umpire Hermin doing the toss with service George Jilani Basha from India. So it's a combination of Iranian and Indian out there. This is Gayatri Gopichan, 18-year-old with Tressa Jolly. Yes, Tressa was also the part of the first match in the mixed doubles final with Arjun Emar. Unfortunately lost against Sachin Dias, and Thileni Hendawa won the gold. And the umpire, Herman Armin Mer from Iran. See, he's all set, quite composed as well. And the service George, Jilani Basha from India. Quite a tough job when you're calling the shots. You have to soak in the pressure. Going through the pre-match rituals, just fine-tuning their techniques. So this is the way they are playing the final. The defeated good Srivedya Gurzada and Ishika Jaiswal from USA. And then that was for Tressa Jolly and Gayatri Gopichan. They had to defeat Radhakrishnan and Neela Vilvan. And now they are locking horns, Godpade and Mishra with Jolly and Gopichan. Tremendous fight back and tenacity has been shown by both the pairs. They should be proud of themselves. The road to the finals has been excellent so far. Just think Jolly and Gayatri Gopichan will be slightly relaxed while a lot of work to do for Shayungita Ghurpade and Shruti Mishra. They stormed their way through. If we talk about Tressa Jolly and Gayatri Gopichan, no fight in the semi-finals. Talking about Gopichan, the 18-year-old, had a long list of awards as well. In the last year, runners-up in the Polish International, then the gold medal at India International Challenge, and they ended up the year with Wales International runners-up. She has a great partner, Tressa Jolly. They look like a cohesive unit. She was also a part in 2022. They have also managed to win the side the Modi International Super 300 tournament runners-up. Now they are here. Odisha Open finals of women's doubles. So Indian Derby. Ladies and A gentlemen, team that doesn't take on my pressure right, Gayatri always Gopichan manages Kolela to win the and finals. The Tressa team that Jolly, plays India. on skills, not emotions. On my left, Sanyugita Ghurpade and Shruti Mishra, India. Gayatri Gopichan Kolela to serve to Shruti Mishra. Love all. Play. Well, outside the baseline. Service over. One. What a love. good drop shot, but then not being able to control that shot.
Fantastic retrieve. Well, it was there to be put away, Service over. but 1 again, all. Mishra missed it completely there. The backhand drop. And both the players, Gayatri and Trisha Jolie, taking baby steps to make her own destiny. 2-1. They managed to be a fine duo so far. Class is always there. It's all about the form. It's all about the day. Good slice. Service over. 2-all. Important thing for Mishra and Ghorpad will be just to keep a little bit distance from Jolie and Pulela. Another wide shot. Service over. It has been a good start. 3-2. They're looking slightly rusty. Both the players, Ghorpade and Mishra. Women's doubles final. Good return. 4-2. Fantastic slash from Ghorpade. Correction from Jolie. Oh, that was a good shot, but then Service not over. being able to 3, control her 4. smash. Way wide. Another point gifted to Mishra and partner. Service over. 5-3. 5-3. And it has been a fantastic journey for Gayatri, daughter of the vastly successful Gopi Chand, the second youngest player to feature in the BBL. 6-3. Excellent drop shots and so risky at the court. Whenever you look at Gayatri Gopi Chand, always has a bit more time, that extra second. Class was written all over it. That drive 7-3. into her body. No response from Ghorpade. Straight away apology from Gopi Chand. But then wonderful strokes. Class was written all over it. Service over. Unforced error there 4-7. from Jolie and Gopi Chand. Another fault from 5-7. Gayatri. She has been a fabulous player. She was also the part of the Indian team at the Asian Games in 2018. So much at ease there. No response. Service over. Just 8-5. played all over it there. They are taking the lead. These are not good signs for Ghorpade and Mishra. They have to be more active in the central line. There's a lot of gaps. Fantastic. Excellent 9-5. from Jolie and Pulel and Gayatri. Promising duo, trying to make a mark in the world stage. This is the stage that has been provided by Odisha. Katak.
10. 9-5. They're running away with this game. In the semi-finals, we saw how dominant they were. Don't want to give an opening to Jolly and Gayatri. Well, trying for that depth touch. 11-5. Interval. Was not able to control that and didn't have any power. Jolly and Gayatri charge on, march on, 11-5. Semi-final pressure getting into Mishra's and Ghorpade's head. Do they have the fight? We'll soon witness that. Semi-final always is a tough job, but this is the final. The pressure cooker moments. You have to win moments. Don't want to win the match straight away. It's all about 20 seconds. keeping your cool and calm under pressure. Cool as a cucumber, as they say. And in the finals, just need to know where your head is. It's been a fantastic journey 11-5. for Tressa and Gayatri. They pulverized Neela and Service Arul 6-11. in the semi-finals. Good play there by Mishra and Co. Service over. 12-6. But you want to seize to every opportunity that has been provided by your opponent. Don't want to let your guard down. Well, a faintest of touch did it. 6. It was a good rally, but then they were always in control, Jolly and Gayatri. Another point 6. for the promising duo. Quite an amazing year for them. Last year was incredible. This year they have started off with the runners-up trophy in 2020 side, the Modi International. Again, just maintaining their dominance over their opponents. 15-6. I'm afraid that this is the way that these two have decided to play. All-out attack. They have got this game by the scruff of the neck. 16-6. No response from Ghorpade and Mishra. Service over. 7-16. Little bit of blip there. A little bit of error in judgment there. They left it, but then for a moment we thought that was error. But again, Jolly and Gayatri, Service over. even though they're leaving they're leaving it on the 17-8. line. Very important to watch that bird right till the end. You don't want to predetermine the shots. Good use of the rear coat, and another point for 18-8. Jolly and Gayatri. They are making merry here at Odisha Open 2022. It has been a one-way traffic so far.
A battle of cat and mouse. Oh, at the end, Service over. 9, Mishra had the 18. last laugh. She had the intelligence just to put it away. And well done by Ghodpade as well. They're still staying in the hunt. They will be mighty pleased with that. Service Another over. point given 19, well outside the 9. baseline. They're using the depth of the court. And that red court is very important. This is magical. This is 20 clinical. This game is points, classy 9. from Gayatri there. Finesse, class, panache, everything to it. It was too quick for her. Service over. Good 10, response 20. from Mishra there. It was traveling. Was into her body. Well, fantastic 11, response 20. there at the highest point of the contact with a flick of the wrist aimed to settle downwards in a steep gradient. Brilliant play there from Mishra. Another point. 12, Just 20. one shot off the game point. Quite a good comeback. 3 straight points for Ghodpade and Mishra. That over the head shot is quite brilliant. They do it. Game. They do it at a canter. First game Surely won by and Reza Gayatri Jolly have done the job. and They have Gayatri seized Gopichand the Polela, first game. 21, 21-12. Enjoying. In the final day of Odisha Open 2022 here at Jawaharlal Nehru Indoor Stadium at Cuttack in Odisha, the fight is going on for the women's doubles crown, and Sangyutita Ghorpade with partner Shruti Mishra. They play Teresa Jolie and Gayatri Gopichand Pulela. Now Pulela and partner, Pulela and Trisha, they've already pocketed the first game. And this is significant for the reason that Trisha, who played the first match of the day today in the mixed doubles, definitely she has not been subjected to that amount of fatigue and pressure, and she's been able to prove her mettle beyond the fatigue and beyond the pressure. And she's been able to do her best, 20 seconds. just 20 lending seconds. the great support, the needed support that Gopichand Pulela, Gayatri Gopichand Pulela, expected from the partner. And this is the second game of the final fight for the women's doubles. Second game. Love all. Play. One, love. Continuing from where they left. They've drawn the first blood by winning the first game. And this is the second, the do or die for Mishra and co. Well, too far away.
The tram lines were active. 2 love. And then slightly off the radar. This has been one of the most clinical performances so far. No response from the opposition. They're doing it in a canter here. First game done and dusted. This is the second. They're already 2-0. Now they're just playing to the tune. They know, they sense a victory here. 3-0. And what a comeback it has been. Wonderful from Julie and Gayatri. They're doing it in a canter. 4 love. 4-0 से आगे देखिए किस तरह से वहां पर एक और अंक लेने में सफल रही जॉली और पुलेला की जोड़ी। आज इस आखिरी दिन में त्रिसा जॉली पहले भी खेल चुकी हैं मिश्रित युगल वर्ग में। वो मैच हार गई थी लेकिन यहां पर जीतना जरूर चाहेंगी। 5 love. गोपीचंद गायत्री आपके स्क्रीन के सामने। शानदार प्रदर्शन रहा था पहला गेम। गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली ने अपने नाम किया। उसके बाद इस दूसरे गेम में अब 5-0 से आगे चल रही थी। अब यहाँ पर एक गलती, अनफोर्स्ड एरर, जिस वजह से पहला पॉइंट घोरपड़े और मिश्र की जोड़ी को। यह है ओडिशा ओपन 2022। सीधा प्रसारण जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से आप देख रहे हैं सिर्फ डीडी स्पोर्ट्स और प्रसार भारती के यूट्यूब चैनल पर। क्या तगड़ा स्मैश देखिए आप, सीधे उनको परेशान करती हुई मिश्रा और घोरपड़े की जोड़ी इस मुकाबले में काफी पीछे चल रही हैं इस समय। पहला गेम हार चुकी है, दूसरा गेम जीतने की कोशिश करनी पड़ेगी उन्हें, लेकिन अब दूसरे गेम में अभी भी 5 अंक पीछे से उसको 6 अंक बना दीजिए। बढ़ता हुआ 6 अंकों पर पहुंच गया है। 7-1 से आगे इस समय गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली की जोड़ी। त्रिसा जॉली जो कि एमआर अर्जुन के साथ मिलकर मिश्रित युगल का भी फाइनल खेल चुके हैं, अब इस समय गायत्री गोपीचंद के साथ ये महिला डबल्स का फाइनल भी खेल रही हैं और यहाँ पर अच्छी प्लेसमेंट, एक और अंक उनके पक्ष में। 8-1 से आगे, कोई दबाव नहीं, पूरी तरह से हावी हुए हैं इस मुकाबले में त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद। यहाँ पर एक गलती, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि अच्छी प्लेसमेंट वहाँ पर, जिस वजह से घोरपड़े और मिश्रा की जोड़ी को एक अंक मिला है। हाल ही में समाप्त हुए सैयद मोदी इंटरनेशनल प्रतियोगिता में रनर्स अप रहे थे गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली। वहां पर मलेशियाई जोड़ी ने उन्हें हराया था फाइनल में, लेकिन यहाँ पर एक ऑल इंडियन फाइनल खेल रही हैं दोनों, और दोनों आगे चल रही हैं इस समय। 7 अंक की बढ़त दूसरी गेम में, पहला गेम जीतने के बाद। गायत्री गोपीचंद की सर्विस, यहाँ पर जॉली की गलती, मार बैठी सीधे शटल को नेट पर, जिस वजह से एक अंक मिला है उनके पक्ष में। 9-3 की बढ़त इस समय। श्रुति मिश्रा और संयोगिता घोरपड़े, उन दोनों को कोई मौका नहीं दे रही है। यहाँ पर माफी मांगी गायत्री गोपीचंद ने, क्योंकि पता है नेट का साथ, भाग्य का साथ उन्हें मिला, जिस वजह से एक पॉइंट उनको और 10-3 से आगे इस समय। एक अच्छी रैली, लेकिन एक गलती के साथ ये रैली का अंत होता हुआ। एक्शन रिप्ले में आप देख सकते हैं, जॉली वहां पर प्लेस करना चाहती थी इस शटल को, लेकिन नेट से जा टकराई।
अनफोर्स्ड एरर के चलते घोरपड़े और मिश्रा की जोड़ी को 1 अंक मिला है। दक्षिण भारतीय राज्य केरला से आती है त्रिसा जॉली। 5, 10. वहीं बैडमिंटन लेजेंड पुलेला गोपीचंद की बेटी हैं गायत्री गोपीचंद, और इन दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिखाया है। बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और यहाँ पर ओडिशा ओपन 2022 के फाइनल मुकाबले में एक और भारतीय जोड़ी के खिलाफ खेल रही हैं। और इसके साथ ही ये दूसरे गेम में मिड गेम ब्रेक तक 6 अंकों की लीड के साथ देखिए किस तरह से रिटर्न करने में सफल नहीं रही घोरपड़े, और ये अंक मिला फिर से जॉली और पुलेला की जोड़ी को। 11-5 से इस समय आगे चल रहे हैं। क्या शानदार प्रदर्शन रहा है इन दोनों का अभी तक इस मुकाबले में। पहला गेम जीते थे, दूसरे गेम में आगे चल रही हैं, और शायद कल भी जो सेमीफाइनल मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर जो दूसरा सेमीफाइनल था महिलाओं के डबल्स में, वहीं त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद ने अरुल बाला राधाकृष्णन और नीला वल्लवन को हराया था। वो मुकाबला भी काफ़ी एक तरफा रहा था, और इस मुकाबले में भी अभी तक एक तरफा प्रदर्शन करते हुए हावी हुए हैं गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली। दोनों खिलाड़ी आपके स्क्रीन के सामने मिड गेम ब्रेक के बाद फिर से इस मुकाबले को शुरू करते हुए। इससे पहले पुरुष सिंगल्स में एक शानदार मुकाबला देखने को मिला था, जहां पर किरण जॉर्ज ने प्रियांशु राजावत को हराया था। ये महिलाओं का डबल्स का फाइनल है, और यहां पर कुछ समय पश्चात संयोगिता घोरपड़े की ये अच्छी रिटर्न, जिस वजह से उनके जोड़ी को 1 अंक मिला है सर्विस करने के लिए तैयार होते हुए संयोगिता घोरपड़े। फिर से सर्विस में 1 अंक। मिड गेम ब्रेक के बाद लगातार 2 अंक मिले हैं उन्हें। क्या उसका फायदा मिल सकता है? क्या मानसिक रूप में एक सकारात्मक संकेत है ये? जी हाँ, एक और अंक, लगातार तीसरा अंक मिड गेम ब्रेक के बाद। उससे पता चलता है कि कितना दबाव रिलीज हुआ होगा, कितना हल्का महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर से त्रिसा जॉली नेट पर मार बैठी। 11-9, अब बढ़त सिर्फ 2 अंकों का रह गया है। थोड़े कॉम्प्लेसेंट हो गए शायद। जी नहीं, फाइनल्स में कॉम्प्लेसेंसी की कोई जगह नहीं है, और इस रिटर्न से वो पता चलता है कि क्या दमखम रखती हैं ये दोनों खिलाड़ी। बेहतरीन रिटर्न और 1 अंक और हासिल करते हुए अब सर्विस करने के लिए जॉली तैयार। क्या बढ़िया, क्या शानदार नेट प्ले वहां पर। तो ऐसा लग रहा था कि बढ़त घट रहा है, लेकिन फिर से उस बढ़त को 4 अंकों तक लेकर पहुंच गए हैं। इस बार गलती बाहर मार बैठी, अपने आप से नाखुश श्रुति मिश्रा। देखिए आप, वहां था, स्मैश लगाना चाहती थी, लेकिन बहुत ही ज्यादा दिशाहीन, जिस वजह से 1 और अंक। 14-9 की बढ़त। एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद दूसरे गेम में वापसी कर सकती है श्रुति मिश्रा और संयोगिता घोरपड़े, लेकिन वो नहीं हुआ है। इस बार फिर से गलती, 1 और अंक। बार बार वो गलतियां दोहरा रहे हैं, जिस वजह से ये जो अनफोर्स्ड एरर है वो मदद कर रहा है त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद को। 15-9 की बढ़त अब त्रिसा और गायत्री के पास। इस बार फिर से दिशाहीन, इस मर्तबा संयोगिता घोरपड़े गलती करती हुई। 16-9 का स्कोर लाइन। नेट पर मार बैठी, 1 और अनफोर्स्ड एरर, फिर से 1 अंक। ऐसा लग रहा है मानो अब ये मुकाबला एक तरफा हो चला है। हालांकि बैडमिंटन एक ऐसा खेल है जहां आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, भविष्य आप नहीं देख सकते, लेकिन जैसे इस मुकाबले में हावी हुए हैं, जिस तरह से दबदबा रहा है इन दोनों खिलाड़ियों का, देखिए एक मर्तबा फिर से
विपक्षी खिलाड़ी, विपक्षी जोड़ी गलती कर रही है, उसका मदद मिल रहा है, जिस वजह से अब लीड 2 गुना हो चुका है। 18-9 से आगे जॉली सर्विस करते हुए। Service sold. 10-18. बहुत समय बाद एक अंक मिला घोरपड़े और मिश्रा को, लेकिन यहां से वापसी कर पाना असंभव प्रतीत हो रहा है। बहुत ही बढ़िया सूझबूझ, बहुत ही बढ़िया तालमेल गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली के बीच। उन्हें पता है कौन शटल तक जाना चाहिए। देखिए एक और अंक, Service sold. 19वां अंक इस दूसरे 19-10. गेम में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली के नाम। बहुत बढ़िया स्मैश के साथ त्रिशा जॉली ने फिनिश किया। पहुंच गए हैं मैच पॉइंट और चैंपियनशिप पॉइंट तक। त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी दमखम रखती हैं दोनों खिलाड़ी, और आज इस मुकाबले में वो देखने को मिला है। 20-10 से आगे बस औपचारिकता ही बाकी रह गई है इस मुकाबले में। और उस औपचारिकता को पूरा किया। इसी तरह ये आखिरी अंक हासिल करने के बाद महिलाओं के डबल्स मुकाबले में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली ने जीत हासिल की। काफी शानदार जीत, स्ट्रेट गेम्स में ये जीत हासिल किए हैं ये दोनों खिलाड़ियों ने। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली, बहुत बहुत मुबारकबाद। बिल्कुल एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। पहले गेम में 21-12, दूसरे गेम में 21-10 से जीत हासिल करने के बाद यहाँ देखिए आप गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली खुश नजर आ रही हैं, और सेमीफाइनल भी एक तरफा रहा था उनके लिए, फाइनल में भी हावी हुए। और इस तरह से ओडिशा ओपन 2022 के जो महिलाओं का डबल्स मुकाबला था, वहाँ भारत की गायत्री गोपीचंद और भारत के ही त्रिशा जॉली जीत हासिल करती हुई उन्होंने हराया है एक और भारतीय जोड़ी संयोगिता घोरपड़े और श्रुति मिश्रा को। एक शानदार जीत, बहुत बहुत बधाई दोनों खिलाड़ियों को। और ये देख सकते हैं आप श्रुति मिश्रा और उनके साथी खिलाड़ी संयोगिता, और यहाँ जो आज के विजेता हैं इस डबल्स के मुकाबले के, महिलाओं के डबल्स के मुकाबले के विजेता हैं त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद। जी हाँ, 21-12 और 21-10 से त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद जीतती हुई, और उसके घोरपड़े और मिश्रा ने उतना अच्छा फाइट देखने को नहीं मिला। कल घोरपड़े और मिश्रा एक अच्छा प्रदर्शन करते हुए श्रीविद्या गुरजदा और यूएसए के इशिका जायसवाल को हराया था, लेकिन आज इस फाइनल मुकाबले में 21-12 और 21-10 से गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली जीत हासिल करती हुई। अब से थोड़ी देर बाद इस मुकाबले का जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी है वो शुरू होने वाला है। ओडिशा के रौप्य नगरी और दूसरे सबसे बड़े शहर कटक के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं। ये शहर अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है, अपनी खेल के लिए जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले बाराबटी स्टेडियम में होते हैं, और हम जहां मौजूद है जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम, यहाँ पर बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इंडोर गेम्स का आयोजन हुआ है। सबसे रिसेंट, सबसे नज़दीक वाला जो टूर्नामेंट यहाँ पर खेला गया था वो था कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले। अगला मुकाबला है आज के दिन का और इस प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला, वो है मेंस डबल्स फाइनल, जहां भारत के रवि कृष्णा पीएस और उदय कुमार और सामने रहेंगे मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद और लिम थिम। और आशा किया जा रहा है कि प्रतियोगिता का आखिरी मुकाबला, मेंस डबल्स का फाइनल मुकाबला
बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अब से थोड़ी देर बाद वो शुरू होगा, लेकिन उससे पहले जो पुरस्कार वितरण May I समारोह request है the players महिलाओं के to डबल्स का, proceed वो toward अब आप podium. देख पाएंगे। Silver medalist Yogita Gorpade and Shruti Mishra, India. Gold medalist Reza Joli and Gayatri Govichan, Pune, India. On behalf of Shri Ajay Kumar Singhania, General Secretary, Badminton. जी हाँ, ये है रनर्स अप जोड़ी संयोगिता घोरपड़े और श्रुति मिश्रा। Executive Director मेंस डबल्स का ये फाइनल मुकाबले में ये रनर्स अप रही हैं। Dalmia Bharat. May I request the silver medalist ये देखिए आपके सामने गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली, उन्हें कटक का जो सबसे प्रसिद्ध, जो सबसे जाना माना सिल्वर फिलिग्री वर्क, उससे नवाजा जा रहा है। विश्व भर में प्रख्यात कोणार्क के सूर्य मंदिर का ये प्रतीक इन दोनों खिलाड़ियों को मिलता हुआ। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद आज के विजेता। Thank you, sir. विनर्स और रनर्स अप महिलाओं के डबल्स मुकाबले में बहुत बहुत अभिनंदन गायत्री गोपीचंद और त्रिसा जॉली के जोड़ी को। अभिनंदन संयोगिता घोरपड़े और श्रुति मिश्रा को भी, फाइनल तक का सफर तय किया, प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया। और महिलाओं के डबल्स में ये चारों भारतीय खिलाड़ी देश का नाम रोशन करती हुई। एक जबरदस्त दिन रहा है अभी तक इस ओडिशा ओपन 2022 के आखिरी दिन में। एक शानदार दिन रहा है अभी तक, सुपर संडे, जहां कुछ रोचक मुकाबले देखने को मिले हैं हमें। पहले सचिन डायस और थिलिनी हेंडेवा ने एमआर अर्जुन और त्रिसा जॉली को हराया था मिश्रित युगल वर्ग के फाइनल में। उसके बाद उन्नति हुड्डा ने स्मिथ तोष्णीवाल को हराया था महिलाओं के सिंगल्स फाइनल में। उसके बाद एक रोमांचक पुरुष सिंगल्स का फाइनल देखने को मिला, जो ऑल इंडियन बैटल, उसमें किरण जॉर्ज ने प्रियांशु रजावत को हराया था। और महिलाओं के डबल्स में ये एक तरफा मुकाबला रहा, जहां त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी ने संयोगिता घोरपड़े और श्रुति मिश्रा को हराया है। थोड़ी देर बाद शुरू होगा आखिरी मुकाबला इस प्रतियोगिता का, मेंस डबल्स फाइनल। रवि कृष्णा पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार, उनके सामने होंगी मलेशियाई जोड़ी नूर मोहम्मद अर्जीन अयूब अजरीन मलेशिया से, लिम किम वा अपने साथी खिलाड़ी के साथ। अब से थोड़ी देर बाद वो मुकाबला शुरू होगा, लेकिन क्या शानदार दिन रहा है। जितना तारीफ की जाए उतना कम है आयोजकों का, ओडिशा सरकार का, BWF और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया और ओडिशा स्टेट बैडमिंटन एसोसिएशन का। BWF टूर सुपर 100 ओडिशा ओपन 2022, पहली बार के लिए ओडिशा में बैडमिंटन और BWF का इतना बड़ा मुकाबले का आयोजन हुआ है। आखिरी मुकाबले से पहले कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ गए हैं सरोज देवभन जी मेरे साथ, वरिष्ठ अंग्रेजी कमेंटेटर। सरोज जी, आपके अपनी राय क्या है, कैसा लग रहा है ये प्रतियोगिता? 2 दिन हमने कवर किया, उससे पहले 25 तारीख से ये प्रतियोगिता शुरू हुआ है, और ये ओडिशा बैडमिंटन के लिए कितना बड़ा बात है? If we talk about Odisha badminton, this would be different. But if we can talk about the India badminton, it definitely can go a long way in generating the interests among the people. But the obstacle is viewers are not present. So playing to empty stands is definitely a trying experience, because
There is no psychological inspiration is there. And we hope that after the pandemic is over, we can have more of these tournaments. Since this is organized by the government of Odisha, we have every reason to think that there will be many such editions of Odisha Open in the coming days and in the coming years. And to come back to the arena right now, this is the last match of the day. That is the men's doubles finals. Everybody had been waiting for this match, and this is going to be the clash of the titans. Ravi Krishna PS with partner Uday Kumar. There goes the toss. That's Fabio Balto from Italy. The chair umpire, assisted by service judge Emmanuel K. Gabotse Sole, coming from Botswana. Even though we have officials from different countries, we don't have many of the players coming from different countries because at the last moment, many of the players, the budding young players, they opted out for many reasons, and COVID-19 being one of the main reasons. Much before the tournament was to take up, 698 players, they were registered for the tournament. But at the onset, there were as less as 350 players in all categories vying for the different titles. And this is the first edition of a Badminton World Federation Odisha Open Super 100 International Badminton Tournament. That is Fabio Balto. Seems to be quite pleased with the interest of the people there. And this is Emmanuel from Botswana. He is the service judge. And the showdown would be between Ravi Krishna PS with partner Shankar Prasad Uday Kumar versus Noor Muhammad Azleen Ayub Azreen with partner Lim Kim Wah. They represent Malaysia. Malaysia has a strong tradition in international badminton, and this is their way. They moved off to the finals. Now, Ravi Krishna PS and Uday Kumar, the bit Hanumaya and Asit Surya in the semi-finals. Similarly, Noor Muhammad Ajureen with Lim Kim Wah. They had beaten Sachin Reyes and B. Gunatileka. Sachin Reyes, we saw that he was able to clinch the mixed doubles title this morning. And Sachin Reyes is one of the top names in Sri Lankan badminton. So that was the end of the run for Sachin Reyes. The stage is all set and ready for the medal match, for gold medal match in the men's doubles category. Ravi Krishna PS and Shankar Prasad Uday Kumar. We had been watching Uday Kumar and Ravi Krishna PS yesterday all through, and it was a wonderful sight to watch Uday Kumar moving quite widely, covering a large section Ladies and of gentlemen, the court, on my right, Ravi and Krishna doing it PS wonderfully. And that is the way they Shankar moved up to Prasad the Udaya finals. Kumar, India. And on my left, Noor Mohammed Azrim Ayub जी हाँ, ये Azrim है and Lim सबसे Kim Wah, बड़ा मुकाबला Malaysia. भारत बना मलेशिया जो आखिरी मुकाबला है Shankar इस Prasad प्रतियोगिता Udaya का Kumar to serve to Lim Kim मेंस Wah. डबल्स का फाइनल जहां पर Double रवि कृष्णा Flag. पीएस और शंकर प्रसाद उदय कुमार सामना कर रहे हैं नूर मोहम्मद अजरीन और लिम किम वाह के खिलाफ। और शुरू होते ही One एक love. अंक हासिल करते हुए भारत की जोड़ी, पहला अंक यहां पर और इसके साथ एक और अंक। 2 love. जी हाँ, शुरुआत अच्छी रही है अब तक।
लेकिन ये सिर्फ शुरुआती क्षण है, ये मुकाबले कभी करवट ले सकती है। बाहर मार बैठे यहाँ पर गलती मलेशियाई खिलाड़ी के द्वारा, जिस वजह से अब तीसरा अंक भारत के पक्ष में। 3-0 से आगे रवि और उदय कुमार की जोड़ी। इस बार सर्विस में गलती, अच्छी जजमेंट वहां पर, जिस वजह से पॉइंट मिला है मलेशिया को। वो भी अपना खाता खोलते हुए। अजरीन की सर्विस, काफी बढ़िया रैली, काफी समय तक चला ये रैली और अंत में अजरीन और लिम खिम ये अंक हासिल करते हुए। बाएं हाथ के खिलाड़ी का जबरदस्त स्मैश, कोई मौका नहीं था भारतीय खिलाड़ी के पास उसे लिफ्ट करने का। इस बार बाहर मार बैठे, बराबरी का अंक भी हासिल कर दिया है। 3-3 के बराबरी पर, और शुरुआती क्षणों से ये लग रहा है ये मुकाबला काफी रोमांचक होने वाला है। हम पहले से ही आकलन कर रहे थे कि ये मुकाबला, जिस तरह से कल ये मलेशियाई जोड़ी श्रीलंका के सचिन डायस और गुणतिलका को हराया था दिन के आखिरी मुकाबले में, आखिरी सेमीफाइनल में, आज ये आखिरी फाइनल भी उतना ही रोमांचक होने वाला है। एक और अंक भारत के पक्ष में, 4-3 से आगे रवि और उदय कुमार। ये जबरदस्त मुकाबला है। ओडिशा ओपन 2022, यहाँ पर गलती अजरीन के द्वारा। 5-3. 5-3 से आगे रवि और उदय कुमार। ये जो जैसे शुरुआत की है उसी तरह से आगे बढ़ने की कोशिश जरूर करेंगी। यहाँ पर सर्विस में एरर, Service over 4-5. जिस वजह से सर्विस अब गया है मलेशिया के पक्ष में। गलती कर बैठे वहां पर सर्विस के दौरान भारतीय खिलाड़ी। इस बार बाहर जाती हुई शटल। 5-all. 5-5 की बराबरी पर यह मुकाबला। आज आखिरी दिन है, ये आखिरी मुकाबला है इस प्रतियोगिता का। कोरोना वायरस के प्रोटोकॉल गाइडलाइंस को मानते हुए बिना क्राउड के ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। लेकिन जो इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहते हैं वो टीवी पर डीडी स्पोर्ट्स में, और उसके बाद अगर ऑनलाइन देखना चाहते हैं यूट्यूब पर प्रसार भारती स्पोर्ट्स से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बढ़िया रैली, ताकत झोंक रहे हैं, फिर चालाकी भी दिखा रहे हैं। और इस बार दोनों के बीच में शटल 6 को जैसे सुई में धागा पिरोया जाता है उसी तरह से प्लेस किया और एक अंक हासिल किया। अच्छी प्लेसमेंट देखिए आप अंतिम समय पर लिम खिम वाह का, और कोई मौका नहीं था दोनों भारतीय खिलाड़ियों के पास, जिस वजह से अब 6-5 से आगे चल रहे हैं मलेशियाई जोड़ी। सर्विस भी उनके पक्ष में है। इस बार बाहर मार बैठे, कई है शटल बाहर। एक अनफोर्स्ड एरर मलेशियाई जोड़ी के द्वारा। 6-6 की बराबरी पर इस मुकाबला अब आकर पहुंचा है। Very interesting match that is going on between 7-6. the Malaysian and Indians. Rabi Kumar and partner serving Malaysia at 7-8. Service over 7-all. The 7-all. This is how the Malaysia serves Indians. Aggressive attack that is on the part of Service over Azwin. 8-7. And the Malaysians, they have a different style because one of them is southpaw. So that helps to bring the coordination on the court. Service over 8-all. This is what to serve at 8-all. Oh, going for a very short serve. That's all caught between the lines. Service over And it was
not possible on the part of the war and Azreen to make a good return serve ultimately. At 9-8, Ravi Krishna PS to serve. Correction, Uday Kumar that was. Great smash that was. And it failed. Azleen to come up with the return. 10-8. That's how it happened. Azleen was clearly beaten. And no way he was able to lift it up. We've been watching a lot many aggressive shots from the Indians. Service over. 9-10. Aggressive stance there. Oh, dealing with a close net shot is very important, and that is what the Indians they are trying to serve. One has to admit the perseverance on the part of the Malaysians. 10-all. Thank you. Had this not been the empty stands here, the people would have definitely appreciated what the Malaysians did right now on the court. 10-all. Sheer magic that was. But they stand on equal footing, 10-all. Just 2 drops. Yeah. The Malaysian duo and Indian duo. Thank you. In the final showdown in the men's doubles category. Play. Yes. 11-10. Interval. Tactically, the Indians, they have a different style of playing there. Look at this. The Malaysians, they make the Indian opponents move Please wipe the drops. widely on the court. So that is the way they try to bring a certain amount of confusion among the Indians. Malaysians, their style and tactical awareness is much, much different from the In the Indian middle. players. Yeah. As we have been watching Drops right there. now on the court Under the here net, please. at the Jawaharlal Nehru Indoor 20 Stadium seconds, in the first 20 edition of seconds. Odisha Open 2022. There's the Indian coach just lending a few important tips, because these are the tips which come very, very handy at the moment. 11-10. Play. The psychological comfortability is definitely exerted by their individual coaches. Oh, it was Emblaze hitting. 12. The backhand flick could have been better. Oh, that was a miscalculated shot. How good rally indeed that was. Is still then 13. the Malaysians at the last 10. love there, just putting it in between the opponents. Yes, this is how it landed there. Service over. 11-13. It was a better return
after a long gap from the Indians. 11-13 Indians to serve Malaysians. Service over. Mostly staying put to the 14, late 11. line. That is the way they wanted to pocket the points. Wow. Service over. The 12, coordination has been perfect. 14. In a tandem-like movement, the Malaysians, they have been rotating in the court to exert a greater amount of pressure on the Indians. The power and punch that was there, and the accuracy was 13, perfect. 14. Look at the stance of the Indian players. That was a wonderful piece of action coming from the Indians. Thus pocketing one more point to their booty. 13-14 Indians serving the Malaysians in the first game in the final showdown between the India and Malaysia doubles men's. Service over. 15, In the 30. slow motion, this is how it all happened. Sometimes being in a hurry is a cause of worry, and that exactly happened in case of the Indians. Sixteen, 30. Oh, it was a wonderful return Service coming over. from the Indians. 14, 16. Just putting it across in such a way that Azreen was clearly beaten, and he was not able to fall back. Play. So this tactical awareness sometimes plays very important to gain more points. In the same way it happened, he was not able to fall back. 15, 16. Thank you. That is the way the Indians are trying to exploit the weak points of the Malaysians. Let's see what is more in store. Of the fireworks once again coming and putting it across 16, between the all. opponents. Just lifting it to a comfortable return from the Indians. Service fault called. Too high. Service over. 17, 16. Right from the first game, there is tremendous amount of pressure on both the Service teams. over. 17, all. They're standing on equal footing at 17 all. This is how they are. They are much eager to pocket the first game. 18, 17. Shankar. The shuttle is okay. When you are about to serve, a little bit quicker to deliver the service. When you take position... That is Fabio Belto, the chair That's umpire fine. I'm just sending the message. from Italy. 18, 17. Play. At 18-17. Oh, this is the way they move up to 19, 19-17. 17. Just 2 points away from the first game. Well, Begoni is half done. That is what they have been in their minds. Oh, that is the way. Just was able to exploit the weak point of the Malaysians. 20. And Game 2017, point.
if they are 17. intelligent enough, if they are sincere enough, and if they are able enough, the game will be theirs. With the first game, Indians can move up to the second game. So, the road to the gold medal would be comfortable and easier for them. At 20-17, 20-17. Indians are looking quite promising and confident. Service over 18-20. Azleen, Play. Game. the game belongs to the Indians. The first game won by Ravi Krishna goes to the TS Indians and in the Shankar Prasad men's doubles. 21-18. So the Indians will find it obviously a shot in the arm to move up to the next game. And the Malaysians, they will have to fight it out to bring an equalizer, and then they can think of showing their prowess in the third and final game. And the Indians will not allow the Malaysians to move in that way. That is Uday Kumar, the coach of Indian team, seems to be more confident with the body language. He shows that how the stretch is to be done and how to make the opponents run widely on their side of the court. That is Uday Kumar taking the last minute tips, because they come very handy and very useful at the time when they need them the best. So with one game up, the Indians are facing Malaysians. The Indians must be mighty pleased with this effort. This has been a tremendous tone setter for this finals of men's doubles here at Odisha Open 2022. Live from Cuttack. You can watch this live on DD Sports and YouTube channel, Prasar Bharati Sports. So a lot of awards at stake, a gold medal at stake. Everything to play for the Indians. They have managed to win the first game. This is the second. Will this be the decider? Yes, the Malaysians are a tough competitor, fierce fighters, scrappers. Love all. They scrape their way through. It's all about the mindset. Will the Indians will be slightly defensive? Well, outside. Service over. The Indians have started on a very good note here. Controlling the pace of the game. Indians dictating terms. Service over. 1-all. The Malaysians come back. 1-all. The pressure of the finals. Well, they left it Service over. on the line. 1. They've managed to sneak in, the Malaysians. The pair of Azreen and Lim. They've played outstandingly well in the semi-finals, Service over. 2. defeating Sachin Dias and Bueneka. That was a cliffhanger. 21-15, 18-21, 17-21. But now this is a different proposition. Ravi Krishna and Shankar Prasad Uday Kumar. They're a fantastic pair. They are playing the finals. Service over. 3. 3-2. Yes, it's time for the Malaysians to take the initiative. They cannot be lackadaisical in the second half. But the Indians, well, they're slightly looking off color. Another 4-2. smash from the Malaysians. Highest point of contact with the flick of the wrist. Aim to settle down in a steep gradient. They're doing it well. They know the importance of this game.
It's their game to survive. For the Indians, Service over. they need to 3, take some time off. 4. Need to rejig their plans. They're in the driver's position. Well, another off shot there. Service Challenging over. the baseline, 5, was well outside. You don't want to give Malaysians a sniff. They're mighty fine players. They use more of their wrist. Service over. 4, 5. Economy in their movement. Now it is 4-5. Well, that was strong and pretty hard to defend and block. Service over. 6. Uday Kumar was 4. in a fix there. Was not able to even sway away from that. Hit it on the body. Testing times for the Indians. A test of their nerves. It's all about the temperament. Good net play. Oh, well, missed out there. Yes, he's disappointed. There was a 7, chance 4. to put it up the net. Faintest of touches. And that dip cross court. Look at the emotions on Uday Kumar's face. Agony. Ball. Receiver. Foot. 8, 4. Stepping in. He was stepping in. 8-4. We're taking a healthy lead now. Indians need to be slightly smarter here. Slightly on their heels at this point in time. We don't want to be complacent. This is the final, the grand finale, the big dance. 9, 4. Now it's Indian to catch up. 9-4, the Malaysians lead. That is increasing after every stroke. Brilliant. They are quite 10, vocal. 4. It was always on the cards. The Malaysians would have definitely attacked in the second half, and they're doing it right now. A lot of pain for the Indian fans who are glued to their television and their mobile, watching this game live on YouTube. 10-5, Malaysians lead. Smart choice of shot there. He was on the mat. 10. The Malaysians had a tickle at it, and then that jump and smash and drop cross court. Pretty hard to retrieve. Let's put it on the net. Indians have been good in patches in the second half. In the first, they were quite a revelation. But the Malaysians showing their true colors. You have to bring your A game into play 6 interval. for the big finals, and Malaysians have done it. 11-6. They're putting on a show here. In the second game, the Malaysians, they are able to exert a greater amount of pressure on the Indians. So the Indians, they have to play in a different way to face the pressure of the Malaysians. The Malaysians are now at 11-8 in the second game.
No, we cannot exactly say that it's all empty stands. These are the 11, officials. 6. These are not the badminton lovers from outside, from the common people. The officials, they have taken their time off from the busy schedule 12, in conducting the 6. matches just to enjoy every bit of this highlighted match in the men's doubles finals. This being the last match of the day, it has generated some amount of pressure, and particularly when Indians are 13, playing against 6. the Malaysia. The Indians are facing the Malaysians. Malaysians are 13-8. The Indian Uday Kumar 14, was not able to 6. pick it up in that way. The reach was too short. This is how it happened. And maybe he was not feeling very comfortable in going for a backhand return. Fifteen, 6. 15-8. Looking a formidable score at the moment, just to bring an equalizer. That is what the Malaysians 16. they have been Sorry. trying to do, so that Service they over. can 7, 15. play comfortably for the third. A variety of shots they are playing actually. Good rally. That was a wonderful piece of rally. Everyone present here, 8, 15. they seem to have enjoyed the rally. And particularly the Indians, they have been able to give a tough fight to the Malaysians. They want to put a checkmate on the Malaysian movement. At 8-15, Indians to Malaysia. Play. Service No. over. 16, The finish 8. was not proper. So the Uday Kumar failed to put it across. Anyway, coming with an aggressive stance there to receive the Indians. Service over. 9, 16. Get ready. In between the opponents, 10, that is the way the 16. Indians put it there. This is called the tactical awareness, making best use of that. So that helped them to pocket 1 point. At 10-18, they'll have to move up definitely Play. to give a tough fight to the Malaysians. Service over. 17, 10. What? It seemed to be all aimless 10. hitting. And from this mistake, the gainer is the Malaysian duo. 19, 10. The style is very different and special on the part of War. Service over. 11, 19. This time, the Indians,
They need to serve at 11 to 19. And the Malaysians are 2 points short of the game. And if they're lucky enough, they'll be able to bring an equalizer. Twelve, 19. It's not even close. It was inside the line. At 12-19, Indians are poised to serve the Malaysians. 12 to 19. This is what 13, the people, 19. the Indian supporters, they wanted Lim, it to happen watch this. at the moment. 13 to 19. No, it was too wide a shot. Service over. 20. Game point. 30. The game point for the Malaysians, they will definitely try to bring it as an equalizer at 2013, and Indians, if they clinch one more point, they will find it very difficult to move up. Service over. 14, 20. Oh, Game. that is the way. This is the end of the second game. Second game won Now by they are Nur 1 Mohammed all Azrin Ayub Azrin at the moment and in Lim the Kim Wah, 21, final 14, run-up for the gold one medal. game all. India won and Malaysia won. The first game was won by the Indians, and the second game ultimately has been won by the Malaysians. So there will be the third and deciding game, and that will decide the gold medal. The Indians are well represented by Ravi Krishna and Uday Kumar, who won the first game in a score of 21-18, while they had to concede the second game to the Malaysians, who won it in the score of 21-14. These are mostly the officials, since rest. ଦେଖିବା ତମେ କର କିଛି ସମୟ ତାପରେ ମୁଁ କରିବି କ'ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସରିବ Final game. Level. Play. The last and final game. This fault call. Too high. Excitement Over. is definitely One. in the air. Love. And Ravi Krishna and Uday Kumar pair, they would definitely try their best to stop the Malaysians to go forward. Mostly playing close to the net. Service over. 1-all. When the game score is 1-all, a confident piece of Service action over. that came from 2-1. the Indians. 2-1 in the third and deciding game. Service over. 2-all.
the timing was itself very wrong. So that is why he was not able to put it across. The Indian lad. Footwork is very important. He was caught in the wrong foot there. Play. Azleen. Service over. 3. At all. 3-all. Uday Kumar to serve. At 3-all. A flick serve. Service over. 4-3. Oh! 5-3. Play alert. Play alert. He was not ready. Wow, has a very distinct and unique style of Play alert because the serving. receiver wasn't ready. 5-3. Coming a bit of warning from the chair umpire, Fabio. Service over. 4-5. Now, this is the turn for the Indians. At 4-5. Service over. 6. The Malaysians, 4. they put it in such a way that the Indian was, Uday Kumar was clearly beaten and he was not able to stay strong to his stance to make a comfortable return. The battle is on, the heat is on between India and Malaysia. Service over. 5-6. शानदार मुकाबला आखिरी गेम तक जाता हुआ ये इस समय 6-5 से हालांकि मलेशिया आगे चल रही है। ये पुरुष डबल्स का फाइनल है और आज का आखिरी दिन का आखिरी मुकाबला है ओडिशा ओपन 2022 में। जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम कटक से सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं और देखिए यहाँ पर सर्विस में गलती जिस वजह से मलेशियाई जोड़ी को एक अंक मिला है। 7-5 से इस समय आगे। पहले गेम को 21-18 से जीतने के बाद भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम गंवाया था 21-14 से और ये आखिरी गेम में इस समय जो डिसाइडर है, निर्णायक गेम है, वहाँ मलेशियाई जोड़ी आगे चल रही है। लेकिन इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कह सकते। वही देखे हैं हम जब भी ये चारों खिलाड़ी, क्योंकि कल जो सेमीफाइनल मुकाबले खेले गए थे वहीं पहला सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी शंकर प्रसाद उदय कुमार और रवि कृष्णा ने वसंत कुमार और अशित सूर्या को हराया था। वहीं मलेशियाई जोड़ी ने श्रीलंकाई जोड़ी को हराया था जहां पर सचिन डायस और गुणतिलका खेल रहे थे और मलेशियाई जोड़ी यही जोड़ी उनको हराया था दूसरे सेमीफाइनल में। वो भी काफ़ी रोमांचक मुकाबला हुआ था और आज उसी की आशा की जा रही थी। हम लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिले। बिल्कुल वही हो रहा है और यहाँ पर दबाव में और ज़्यादा दबाव डालते हुए देखे कि खिलाड़ी नीचे था और ये एक टैक्टिकल जो स्मैश बेहतरीन तरीके से वहाँ पर भारतीय खिलाड़ी के द्वारा रवि और उदय कुमार दोनों के बीच अच्छी तालमेल है। वो माफ़ी ज़रूर मांगे वहाँ पर पीएस रवि। पॉइंट लेकिन भारत को मिल चुका था। 6-8 से इस समय पीछे चल रहे हैं लेकिन सर्विस उनके पक्ष में है।
और यहाँ पर इस निर्णायक गेम में जो दबदबा है वो बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। मलेशियाई जोड़ी भी अभी तक काफ़ी बढ़िया प्रदर्शन किया है अब तक। सर्विस भारत के पक्ष में और यहाँ पर पॉइंट फिर से सर्विस अपने पक्ष में लाते हुए मलेशियाई खिलाड़ी लिम किम और अजरीन, ये जो जोड़ी है ये बढ़िया प्रदर्शन कर रही है। अब 3 अंक से आगे चल रहे हैं। मिड गेम ब्रेक तक लीड बरकरार रखनी जरूर चाहेंगी। और बेहतरीन स्मैश, रवि की क्या शानदार स्मैश वहां पर। यह नजारा किसी भी भारतीय बैडमिंटन प्रेमी को जरूर प्रसन्न करेगा। शानदार तरीके से वहां चारों खाने चित कर दिए अपने प्रतिद्वंदी को। कुछ अच्छे रैलीज देखने को मिले हैं इस फाइनल में, कुछ अच्छे रिटर्न्स, कुछ अच्छे स्मैशेस। यही सब देखने के लिए एक बैडमिंटन प्रेमी जरूर चाहता है। लेकिन यहाँ पर एक गलती, अनफोर्स्ड एरर भारतीय जोड़ी के द्वारा। एक और अंक यहाँ पर मलेशिया को मिलता हुआ। इस समय 10-7 से आगे मलेशियाई जोड़ी, लेकिन अभी भी इस मुकाबले में कुछ भी नहीं कह सकते। फाइनल में आज के दिन में अब सिर्फ 2 एक तरफा मुकाबला रहा, उसके अलावा बाकी सारे मुकाबले, जो बाकी 2 मुकाबले और ये तीसरा मुकाबला, ये सारे मुकाबले काफ़ी रोमांचक रहे हैं। कुल मिलाकर 5 फाइनल्स खेले गए, ये 5वां फाइनल जो चल रहा है इस समय। यहाँ पर गलती मलेशियाई जोड़ी के द्वारा। एक और अंक भारत के पक्ष में। क्या मिड गेम ब्रेक को टाल सकते हैं थोड़ी देर के लिए भारत? क्या यहाँ पर बराबरी तक या फिर बढ़त ले सकती है ये जोड़ी? ये देखने वाली बात है। कोच भी काफी खुश नजर आए, भारतीय कोच रवि और उदय कुमार की, जो कि साइड लाइन पर मौजूद हैं अपने खिलाड़ियों के हौसला अफजाई करते हुए। और इसके साथ ही मिड गेम ब्रेक को एक लीड के साथ जाते हुए अर्जीन और लिम किम 11-8 से आगे इस समय। अच्छा प्रदर्शन। ये फाइनल गेम, ये आखिरी ब्रेक है। इसके बाद जो निर्णायक गेम का जितना भी पल बाकी है वो खेला जाएगा। और ये आशा कर रहे होंगे भारतीय दर्शक कि यहाँ पर रवि और उदय कुमार वापसी करे इस मुकाबले में। सरोज जी। The section of the crowd and mostly comprising of the officials, those who are been entrusted with the organization of this beautiful tournament, the first edition of Odisha Open 2022. Since this is this tournament has not allowed the ordinary spectators to come and fill out the stands there, but still then, just to enjoy every bit of the action in the doubles final between India and Malaysia, everybody is staying put in the stadium. Thank you. And some amount of excitement is definitely there, and that has also helped the players to come up with their best. Particularly, I'm talking about the Indians. Yeah. At 11-8, Malaysians are serving. Indians, though, looked very aggressive and played very aggressively, but still then the point went to the pocket of the Malaysians. Conceding Service over 9-12. this point to Indians, allowing the Indians to have an opportunity at 9-12. Uday Kumar. Great movement on the part of Waugh. Service over 13-9. At 13-9. Get ready. Lim, if
You ask for the shuttle. Even though right the after score is not rally. very Don't take formidable time, okay? on the Play. part of the Malaysians, but it becomes little difficult and challenging for the Indians to come up to that level. Let players. Okay. A little less walk around. Be in position soon, okay? Play. Service over. So swift is the short service coming from 10, War. He 30. has a different style. Particularly, I have been watching all the players in this tournament, but he is so fast in flicking this serve. Now Indians, they have a 11, reason 30. to feel a bit confident at 11 to 13. The Indians are serving. Oh, it was a great rally, but the Indians could not Service over. withstand the pressure that was 14, exerted by the 11. Malaysians. Just considering that point. However, the great attempt by the Indians to hold on to the rally in search of the point that they needed at the moment very, very badly. At 14-11, Azreen. Once more. Service over. 12, 14. Uday Kumar. That was a wonderful placing. The opponents, they were caught between the 13, lines and in 14. between them. That was a good amount of placing, and Waugh was not able to return it. Close on to their hulls at 13-14. Service over. 15, 13. Just whiling away one more point to the Malaysians. At this stage, the Indians cannot afford to be that careless. 16, The way it 30. happened for the last point. Waugh to serve. Clearly way out. 17, 13. 17 Yeah, use your foot. Yeah. to 13. Thank you. Play. Malaysians, they have every reason to be optimistic at the moment. Once again, the same mistake 18, coming from the Indians. 13. And that allows the Malaysians to move up to 18. Service over. At last, 14, a good return 18. that was coming from the Indians. Looking very aggressive, the Malaysians. No! 15, 18. P.S. Ravi. Service over. This is how 19, it was played 15. to the advantage of the Malaysians. Yeah. Just 2 points short from the game and the match. उन्नीस 15 से आगे और Thank you. सिर्फ 2 पॉइंट दूर
टाइटल से ये पुरुष डबल्स की जोड़ी मलेशिया से अजरीन और लिम किम की भारतीय जोड़ी रवि और उदय कुमार के खिलाफ तीसरे गेम में शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। भारतीय जोड़ी ने भी अच्छा तरकश दिखाया है और यहाँ पर मैच पॉइंट और चैंपियनशिप पॉइंट पर पहुंचे हैं मलेशियाई जोड़ी। नेट पर मार बैठे पीएस रवि और जिस वजह से अब 5 मैच पॉइंट बचाने पड़ेंगे भारत को अगर इस मुकाबले को आगे लेकर जाना है तो। यहाँ पर गलती, एक मैच पॉइंट तो बचा लिया, क्या इसे आगे लेकर जा सकते हैं? कुछ भी कहना संभव नहीं है इस समय। 20-16 से आगे मलेशिया, लेकिन सर्विस भारत के पक्ष में। क्या इस मुकाबले को और आगे लेकर जा सकते हैं? ये पुरुष डबल्स का फाइनल मुकाबला ओडिशा ओपन 2022 में भारत और मलेशिया के बीच एक शानदार संघर्ष, लेकिन इसके साथ ही सर्विस में गलती और मलेशियाई जोड़ी अजरीन और लिम किम इस मुकाबले को जीतते हुए, तीसरे गेम को जीतते हुए, फाइनल मुकाबले को जीतते हुए स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। पुरुष डबल्स में ओडिशा ओपन 2022 के पहले गेम को 21-18 से जीता, दूसरे गेम 14-21 और आखिरी गेम 16-21 से जीतकर मलेशियाई जोड़ी यहां पर चैंपियन बने। The last few points which were played in the last game between the Malaysia and India, the Indians were very, very careless. That is Gayatri Gopichand. There are all the stars from Indian contingent, and they have definitely lent a greater amount of shine to the Indian badminton here. And this is the duo, Noor Mohammad and Kim Wah. They are the title holders now in the doubles category in the men's. Wonderfully played. That was the team from Malaysia. Ravi Krishna and Uday Kumar, even though they played very well, but they were not able to continue the momentum that they wanted to keep to their play. So they had to concede as many points as possible. Maybe it was the psychological pressure that they had on themselves because they were playing here, playing in Indian soil. And here the medal ceremony, the presentation. This is how the match between the Malaysians, Azreen and War, was played against Ravi Krishna and Shankar Prasad Uday Kumar. And most of the consecutive points, they were won by the Malaysians, and the game points, they were obviously in the side of the Malaysians. And if we look at the total points, the total tally had been 111 in total in 3 games. So this is how it all happened, and the Malaysians, they had an advantage over the Indians. They are the runners-up team. The Indians, P.S. Ravi and Uday Kumar. They are the runners, and crown goes to War and Azreen. That is on the that is Azreen, and on extreme right that is Azreen is on the extreme right, and War in the middle. As the runners-up, the Indian team, they are the winners. War, and on the right side that is Azreen. Noor Muhammad Azreen, and on the left Lim Kim War. On behalf of Shri R. William Krishna, IS, Commissioner cum Secretary, Sports they are and Youth presenting Success the medals Department, and the Shri stones Ganesh on each other. Zirkunwar, the Senior stones, Executive Director and Plant Manufacturing Head, typical piece of Dalima, textile Bharat, from Odisha. and Shri Ajay Kumar Singhania, This is a piece that General is hand Secretary, woven by the Badminton artisans, Association the of textile artisans in India, Odisha. Odisha And it Open. bears the mark of the Konark Wheel.
That also figures in the length or the memento that is presented to all the players. Here The wheel comes of the progress, the wheel of peace, silver medalist and and the gold wheel of medalist artistry. to claim the mock check. This is the team from India, the runners-up, May I request all the dignitaries and to this join is the team the winner for a group photograph. that wears the crown in the category of men's doubles. The officials from the government of Odisha, they are there with the prize money to the champions, $5,925 US. The guests and the winners. So with this, we come to the end of the first edition of Odisha Open 2022. And the way the government of Odisha Thank you, sir. has been attempting with their best of endeavors to nurture the sporting talents not only in this part of the country but also all over. Because Odisha government has been instrumental in bringing up the World Cup football in junior category and also the World Cup hockey in senior category and also women's hockey and the Commonwealth table tennis. So that is the way the government is giving more importance on it.